welcome Dr. Shukla. I welcome Dr. Sanjay Vani, who is the president of AAP, that is Association of Ayurvedic Practitioners from Mumbai. Secretary Dr. Deepak Rasal, welcome. Welcome to Dr. Dilip Trivedi, who is the ex-president and very active in this organization to bring us all here today. And none but not the least, Dr. Shweta Jadeja, who is also a very potential member of AAP. I welcome her and the dignitaries who are here today, our Gurujan. Thank you, welcome all of you. And all the members here, let's start without wasting more time. And I invite Dr. Jasmine for Dhanvantri Vandana and Dr. Yogesh. Dr. Dilip Trivedi, sorry. सब लोग खड़े हो जाएंगे। धन्वंतरि की वंदना है। सब लोग ईश्वर को प्रणाम करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः पञ्चमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं पुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराममीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका ददतं मृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोदो ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिवं प्रौढदावाग्निमीलम्। Thank you, Dr. Jasmine and Dilipji. I now invite a very instrumental person, Dr. Yogesh Rane, who is the scientific secretary of Association of Ayurvedic Practitioners. You can always think of the person behind the screen. So he's the one. Dr. Yogesh, please come over the stage and take over from here with Naman to Lord Dhanvantari. Let's start the program. Thank you, ma'am, for such nice words. Welcome all of you. Welcome all the dignitaries. Now we are going to start our first session. In short, I would like to thank first all the dignitaries who are here. And this is a very great occasion. You can see in the span of just 10 days, Dr. Nilay Toshi and AP, we have managed to gather you all. So without wasting much of time, I will ask Dr. Anil Shukla sir
to be on the dais for his lecture. Dr. Anil Gopal sir is a well-known speaker. He had completed his BMS from Banaras University. He is an MD in Dravya. Please welcome sir. His BMS from Banaras University. He had completed his MD in Dravya. He is a double gold medalist. Recently, sir is associated with Poddar Medical College, Mumbai. He is PhD scholar in Ayurpharmacology and Materia Medica. Sir has a vast experience of teaching. Almost for 9 years, sir was teaching us, and for last 12 years, he is a HOD. And I would like to tell that I was the person who was under him, and he has taught me in Dravya. Thank you, sir. Sir has published a book named as Concise Dravya. Sir has published research papers. In addition to that, he had presented 10 scientific papers, and he had received so many of awards. The most is that he has been double gold medalist, both the awards from Banaras University. He is the person who had conserved maximum marks from first year to last year. So University of Banaras had given him the gold medal. I would like to give a big clap for that. Sir had received Ayurveda Gaurav in 2022, Ayurveda Education Excellence Award, Dhanvantari Award by R.A. Poddar Medical College, Bishop Bhushan Award, Health Change Mark Award. Sir is going to give his thoughts and tell us something about psoriasis. So I will like to hand over the mic to Anil Shukla sir, please. Thanks, dear. Hello. I'm audible? Thanks, dear Dr. Yogesh Damne, and remembering me as your guru. But I'm not a guru, I was just a Sikshak. There is a big difference between guru and Sikshak. So I was teaching in Nagasapara College while I was a student there. So first of all, I bow my head to Lord Dhanvantari and respect their and first of all, at the outset, I wish to thank organizers, AAP and Indian Hemp to give me this opportunity to say my few experience before of you. My topic is Ayurvedic management of psoriasis. So I think there is no direct relation between Indian Hemp Expo and the psoriasis, but it's a parallel session. So I was supposed to spoke on the hemp, Indian hemp, but as you all aware that in Maharashtra hemp is not legalized. So speaking about and hemp and their products is not good at this stage. So I have some information about this Vijaya. Hemp is in our cannabis of Bhanga. What you tell about it. So here I will discuss today psoriasis. Okay. So as psoriasis, you can see here psoriasis term is derived from two words. Psora means itch. You have seen your present coming with your OPD, lot of itching and scaling. So some rash, some cases, and some redness, and you just are aware that in Ayurveda, psoriasis like skin disease covers under Kushta disease. Kushta is not leprosy, it's all skin diseases covered in Kushta headings, Kushta chapter of Charak Samhita, where there are a lot of this classification of the skin diseases, where psoriasis is one of the disease. So as you can see here in the presentation, psoriasis is a complex, chronic, multifactorial inflammatory disease which involves hyperproliferation of the keratinocytes in the epidermis with an increase in the epidermal cell turnover rate. Approximately 1 to 3% world population suffering from this disease. In India also, due to a lot of not following our Richarya, Dincharya and other this Adhani, weak, and so this type of skin disease are you can see in our videos regularly. So, looking at the importance of this disease, World Health Organization in 2010 they have given whole year for this disease. The theme was childhood psoriasis, a challenge for all. So this disease was so. In my further slides, it will come to this stigma, in social stigma also, and it comes from generation to generation also. So our children may suffer, and that due to that only WHO in 2016 formed one expert group
to study about psoriasis and recommend its management. So 29th October is recognized as a World Psoriasis Day. So psoriasis can affect relationship at home, school, work as well as sexual relationship and thus reduce quality of life, causes psychological strain. Moreover, psoriasis affects mental health and people suffering from the disease experience significant social stigma. As I told you, people can't visit in social events like marriages, parties, even to any participate in any programs to do their scanning and itching and oozing of the disease. So this is very common in the teenage also. As I told you, the WHO itself uh, told that childhood psoriasis is a very concern thing to take care of. And older people also, age group. The most common is the age of 16 to 22 and then 57 to 60. Ancient text, Ayurveda of the skin, I told you earlier, this comes under broad heading of Kushta Vyadhi. Among the psoriasis is a ek Kushta. We in Ayurveda people describe it, some people call it Ketiv, some ek Kushta. That is like Shudra Kushta. Mahakushta and Shudra Kushta, the further side will come. So psoriasis has been shown to affect health-related quality of life and extends to the effect of like chronic disease also, like depression, hypertension, congestive heart failure, and type 2 diabetes. All diseases are like autoimmune disease. Psoriasis is autoimmune disease. So due to that only all these problems also comes. So considering the psychosomatic nature of the disease and the role of the stress as the most common predisposing factor of the psoriasis. So due to stress, you know nowadays lot of stress due to workplace or study or peer pressure. So a lot of stress is going on. So due to stress, one of the main cause of the psoriasis. So as I told earlier, the type of kushta in there are that upper snake means numerous number of this kushta disease, kushta and mahakushta. There are 7 types of mahakushta and 11 types of chudra kushta. So there are some names are given. Our this psoriasis comes under this as you can say ek kushta. First in the chudra kushta number 1 with ek kushta is psoriasis. It is classical references also. According to Acharya Surat, the kushta comes under upsargik roga and sansamak roga. Also it is the inherited diseases. As I told you, that's why the child disease is coming up. According to Bhagavata, kushta is included in the Sapta Mahavyadhi. We heard about the Ashta Mahagada. Kushta is coming under Ashta Mahagada. But Bhagavata classified as Sapta Mahavyadhi. One of the Sapta Mahavyadhi is kushta. According to Madhav Nidana, kushta is the disease that makes body ugly looking. So Nidan, we all aware, ELR I think makes one ugly people only. So this Nidana is the main factor causing this disease. So this Nidan due to our food, aharaj, or due to viharaj, our different acts, and this mansik, to a lot of stress, beach dosas, heredity due to I told you beach dose, like the problem in your genetic conditions, and sansamas, infectious diseases, coolers and family history, and cremate, somewhat infection also. These are different nidanas. So according to Acharya Chirak, this chapter in Nidanasthan also and in Chikitsa also, the well-defined disease, Kushta, where he mentioned that Asvedanam Mahavastu at Mas Saklopam, where it is not addressed here. Asvedanam means anhydrous, means there is no sweating. She referring to the Charak Chikitsa, chapter 7:21, and Ashtang Hriday Nidan, chapter 14, slok number verse 19. And Mahavastra means spreading over large area of the body. You can see, especially in the joints area, extensor part, our leg, our foot, extensor part, this one is covered this area promptly. So Masya Saklopam means face, skin of the face, extremis and elevated skin lesions. These are differences are the same chapter, chapter number 7, and black and reddish lesion, and round and up with scaling like mica, a brick. So these are some you can see here in the photographs. So must means fish like you can see the fish like skin. And Mahasam is covering large area, your chest, stomach, back, extensor part, leg or foot.
This is the mandal, Aprat Patra Samam, or the shloka, the verses I explained earlier. So this is like you can see if you have earlier seen the Maika in the classrooms, in the practical Abhara Sastra, you can see these are the Maika to separate like this only. So Krishna Arunavranam. So how it comes from Prapti. So as I told in the etiology, the Aharaj, Viharaj, Mansaj and these dosas. So after Nidan Sevana, due to all these in etiology, this Tridos Prakop, Kushta is the Tridosa Vyadi. So this Tridosa Prakop and this, the main Dusya is Dhatu they infest is Twak or skin, Rat and blood, Mans and Lasika, Sathilde. They do their viscosity and their sensitivity happen. So lodging the Tridosas in Sithil Dusya. Then the vitiation of the fourth dosha takes place. That causes kushta. So Prapti Gata, what is the component of these diseases? Those are Vat, Pitta and Kapha. Both are involved. Why they are important? When we are going to treat the disease, we have to know that what type of the disease, what the predominance. Which side that we have to go, Vaman or Raktamoncha or variation. So we have to know that which type of dosha is involved. So this दोषक दुष्चार रक्त मांस रसकंग अपनी जठराग्नि धात्वाग्नि स्रोतस इंद्रसव स्रोतस रक्तवह मांसव स्रोतस. These are the involved in this disease. By mark generally things psoriasis is the external, even scalp, nail, body extension. There are different types of psoriasis. Being further slide will explain. And udho yamase mandagni or vismagni. Sanchari Triyakami means if the skin also your limbs, stomach, back, everywhere. And Adhisthani is mainly skin. So you can here see the first answer to psoriasis patient. So psoriasis region first appear mostly in the scalp region. Almost 55% psoriasis started from scalp. In this bar diagram, you can see, refer here. So maximum percentage of psoriasis is from leg. Generally, the extensor part. You can see dorsal part of the foot, lower leg. Then comes the elbow, these parts. Here you can see generally more common side. And next is the back, thigh, likewise. Okay. So, little bit some modern pathology also, pathogenesis. You can see here the healthy skin and psoriatic skin. Here you can see there, or if it is smooth and plain, but in the psoriatic stays flat and you can see here. So triggers, what triggers the psoriasis? I told you that the smoking, injury to the skin, alcohol, sunlight, emotional stress, drugs, hormone changes, and streptococcus infection. I told you infectious disease also. So they told it's an upsurgic roga. Right? These are the triggers of the psoriasis. The classification of psoriasis, mainly 5 types: the plague psoriasis, dirty psoriasis, inward psoriasis, pustular psoriasis, and erythematic derm psoriasis. Location wise, I told you the scalp is very common. Scalp psoriasis, then comes the nail psoriasis, soles and palms, where we call it vipadika. In Ayurveda, this sole and palm psoriasis called it vipadika. And knee psoriasis. The plague psoriasis, you can see, you can by this thematic presentation, if you can register with your memory, then your OPD, you can differentiate different types of the psoriasis. So this is the plaque psoriasis, this is the dirty psoriasis, this is the pustular psoriasis, first like sign you can see here, formation. This is ectomatic psoriasis, the redness, red patches spread all over the body. This is the inward psoriasis, generally in the groin area. Told you the vipadika one. You can see the sole and palm affecting the psoriasis called plantar and palm psoriasis. Nail psoriasis, you can see. So some people sometimes in differential diagnosis misdiagnose as a fungal infection. So one can see properly and take a history. History taking is very important to make a difference in the fungal and in psoriasis. Scaling. In fungal infection, there is no scaling, only deformity of the nails with infection, but in psoriasis, this type of psoriasis, there is scaling also.
The scalp psoriasis is a very common one. So due to this, lot of hair losses happens also, and itching is there, scaling is there. The psoriatic arthritis is very common nowadays also. Like after selected in the bar diagram, I showed is on different joints involvement. So with your rheumatoid arthritis, you have to differentiate diagnosis. How you can differentiate from the rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. In rheumatoid, you can see the scaling. The scales are not there. So and shape the sword neck deformity you can see here. So there was classical sword neck deformity in the this rheumatoid arthritis, but here it's not like sword neck, but it is deformity of the fingers and fingers. So some conventional management here not we have discussed the conventional management and not to follow, but for the sake of the knowledge from academic field, so just sharing the information. They use the topical corticosteroids, vitamin D analogs, and coal tar is very common nowadays. Some lotions coming with coal tar ingredient for the psoriatic treatment. Phototherapy, the sunlight, UVB, and PUVA. Oral injectable medication is also going on. Some methotrexate, cyclosporine, and retinoids. Phototherapy. Due to all these allopathic treatments, conventional, it's not modern. Nowadays, you can see the Western treatment. This lot of adverse effects happen. Perhaps withdrawal of some topical agents, particularly corticosteroids, can cause an aggressive recurrence of the condition. You may all aware the side effects and adverse effects of the corticosteroids. Cuba is with the nausea, headache, fatigue, burning, itching, long-term treatment is with the stomach cell carcinoma also. So also to take care of if anybody using Cuba for the patient to treatment of the psoriasis, we aware of the fact. So methotrexate, severe liver damage, corticosteroid. So these are the some causing the lot of side effects and adverse effects. Ayurvedic management of the psoriasis. Here principle is the Kush Chikitsa. Basic principle of the treatment of Kush Chikitsa we follow for here Kush also. Take Kush psoriasis is the part of Kush only. So we do Sodhana, Samna, Nidan Parjan to be common for every disease, Nidan Parivarjan. You have to avoid the ecological factor whether causing a disease, which we stop or avoid. And then we first do Sodhan, and in biopurification, what we call the Panchkarma, then start Saman treatment. These are medications. So there are different types of this Sodhana, Anta Parimarjan and Bahir Parimarjan. Anta Parimarjan, you know that for Vaman, Virechan and Rakmanchan. For Bahir and skin, we do different type of Lipa, Parisheka and Osekana. Sastrapardhan is Lekana and Vedan. So Chikitsa Sutra, according to Charak Chikitsa chapter 7, Kush Chikitsa Adhikar, Vatreshu Sapidomnam, Slesmasu Kushtesu, Piktresu Moksho Raktas, Virechanam Chakri. It means this we have to do first Nidan Pardhan, then Sansodhan can come with dosas. Where Vat Pradhan Kushta, they have to do the Gritpana. Different type of breath. I will explain in further slides which type of breath using which type of Kushta. But Vat Pradhan Kushta, we have to do the Gritpan. Station Pradhan Kushta, we do Vaman Chikitsa. And Pitta Pradhan Kushta, we do Virechan and Rakta Moksha, blood letting. Chikitsa with Aushadhi, Anna and Vihar. So Charak Chikitsa chapter 7 verses 14 explain us for Rakta Moksha, Rakshanlalpe Kushtemati cha Sastam Sirabheda means Alpa Kushta, Arthan Kushta. Akshudra Kushta, we have to do fraction only. And for deep seated Kushta, we have to do Sirabhed. Not every skin diseases or psoriasis or we have to do Sirabhed. There are some different type of treatment, even for relating also. So where we have to do fraction and where to do the Sirabhed. Different conditions are recommended. There are some single drugs also very common, and there are some documentary references also. Lot of research going on. Recently, Nicholas Grammar, you know the multinational company, they have done one basic fundamental research of 10 years, and they patented also Mundi, you know, this Spharanthus indicus. Mundi, they have developed one antipsoriatic agent. And now I think it's not only in India, but they're exporting and manufacturing in India, but selling it outside costly treatment. It's the part of pharmaceutical, not in Ayurveda, but plant and medicine from India only, indigenous plant.
Mundi, a very popular Spharanthus indicus. Gorak Mundi. Mundi, Gorak Mundi, start calling Mundi also. Spharanthus indicus. And you know, the Charak Sutra Sthan Check 20, a great program, आप सबने पढ़ा होगा कि what is the best for the particular thing. Where Khadir Pustakna Naam, Charak Sutra chapter 25, it mentioned a great program, like Rasna Vakhanda Naam, Chakramlo Mridurishna Naam. Like that here, Khadir. Khadir is the best drug for treatment of Kushta. So even psoriasis also we can use Khadir also. So other herbs used for the treatment of psoriasis, Apamar, Aragwat, Khadir I told. Kumari, aloe vera, very popular herb. There was research paper. Single herbs also used for the treatment of psoriasis. And Haritra, Amla, Haritki, Daru Haritra, Pakuchi, Neem, Sariva, Manjista. Some Vaidyas do the combination of these all herbs to make. But it is not good practice to make a lot of herbs. You can add 3-4 herbs, quality herbs. The quality is very important. If selecting these herbs, you have to know identify the herb, and when you do powder, it should be not older than at least 6 months. Then you can get the desired effect. So Pristiputa, you know this Rhita tinctoria is very popular. Triple everybody is aware for the treatment of diseases. The Soraline, Soarex, different products and different branded patent or quality products are available in the market. The main ingredient is Krishna Kutach, Rhita tinctoria. Some mineral ingredient also is the like Silajit, Parat, Gandhak, Manesila, Rasmanik, Rasindur, Talkeswaras, Kusthari Ras, Kusht Kutaras, and Kusht Almakras. As I told you, aloe vera, you can see here one research paper published regarding this, Mr. Syed Ahmad and different and et al. They have published in 1996 this management of psoriasis with aloe vera extract in the hydrophilic cream. They have developed, and this was the placebo-controlled double-blind study. They found that this is very effective treatment for psoriasis. Similarly, Silvium marinum is also very good because all these, as I told you, the autoimmune disorder and pathogenesis lies in the liver. Myself, Uttan Vyadi, I told you the Prapti Sanghatan that so this plant, Silvium marcium, like Coleus forscoli also is very popular for liver disorder. And when you are treating psoriasis, you have to think liver also. Right? So this plant is very well known for its hepatoprotective activity. Since the numerous changes has been detected in the liver for patient of psoriasis, including steatosis, periportal inflammation, fibrosis, necrosis, and cirrhosis also. So this Silvium marinum is studied by Mr. K.K. Singh Tripathi in 2014. The natural treatment and alternative for the psoriasis. A review on herbal resources is published. The reference there is a published paper. One can interested can refer this paper also. The Caesatora, the Senatora, we call it the Casumada, is very effective in psoriasis and also possesses antimicrobial activity in the form of an aqueous paste of seeds. In Ayurvedic mention, you can apply different seed paste, leaf paste. So paper is published for this, that Caesatora, the other Maurica chalensa and Calendula is there useful in the psoriasis. Rhita tinctoria, I discussed already, this is also paper published. So visual application oils available, triple 7 oil is developed out this premium research body of India, CCRS, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. It's not Siddha, now it's now name changed. CCRS is not Siddha, if Siddha is now different body. This CCRS is now Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. So they have developed this Rhita tinctoria oil from, and this branded as 777. Many companies manufacturing with different names. They have this technology transfer to many industry people. So other oil is the Marichadi tel, Mamarichadi, Thorak tel, Karudai tel, Datubijadi tel, and Kalisi. These are some external oils for treatment of psoriasis. Similarly, Kalka, different Pradeha and Lepa used for the treatment of psoriasis. For retail application, we use the Potoladi Quat, Muhammad Sadi Quat, and Potol Muladi Quat, Pradesh Quat. Here, point to be noted that when you are using Quat or any formulation, the quality of that product must be assured, standardized, and
efficacy, you can ask with your supplier that if efficacy is done or not. Because and dosage, what dosage you are taking and what time you are taking. If the co-op preparation are giving 40 ml 3 times, 2 times, it will not act as it will not give desired effect. Because it should take empty stomach. Vatha, like Rasana, these should be taken in the Avakta Kala. So also Arista, you know that for Chuna also I told you that 6-month-old powder should not allowed. In practice now they should procure raw material and do powder yourself for desired effects. The different what is the Metazool and Casogul very popular formulation for treatment of psoriasis. In our hospital, a lot of patients are using Casogul. And this Mahamlari Ganpati with and Mahamlari Quat is also very good. Once you take the growth for as a summon and for as a for Sodhan also we are using for your snail pan. Before in Purva Karma we are using snake. So we are using this also. So and for Sodhan, generally due to variation. Government daily people are not doing in OPD levels, it will also be avoid, but variation you can do easily. So we do woman also, where kapha is bone. I told you the kapha dominance, then we do woman also. And for variation, you are best aware that what the process is taught, there is a poor karma, there is some pradhan karma and then paschat karma. In poor karma, we do some powder for digestion of the and to for enlighten the Agni to digest proper Grita. So Grit Pan according to disease, then we do Panchatikta Grit or Mahatikta Grit in increasing dosage. It started with the 40 ml and 20 ml increasing dose. 5 to 7 days. It is not a fixed formula to the 5 days only. You have to see the proper Snehan Lakshan. Then you stop. It takes 8 days also. Some people, if they have oily skin, oily body as Kapat Prakati, then their snake can be coming in 3 days also. So it's not with 5 days only. So then only give 2 to 3 days Sarvanga then, and then Sweden, and then the Virishan. There are some different this the process given. I think all are Vedas, you are aware that in what the Karma we are doing. And this Virishan Yoga I will discuss little bit. Sansankram is dependent on how many Vegas. At least 40 Vegas is Uttam Suddhi. For variation, if there are 40 Vegas, then it's called Uttam Suddhi. Nowadays, only 20, 25, 30 maximum it goes, and people stop further. So we can go for 3 days Sansankram Karma. Generally, it is 5 days. If 40 Vegas are there, for 30 Vegas, we can go for 3 days Sansankram Karma. Like different Lepiment, Pia is. So what we are taking the variation you, there's some Trifla, Trivit, Putki. These are the some Trifla 100 gram, 50 gram, Putki 25 and 50 ml. To make the decoction of these above 3 and I add after cooling down the extract. Don't boil this oil with these herbs. Okay, you know the Sanjan Karma, the different Pilippi, Paya, and we are giving. So Sanjan Karma, these are the, I think you are aware of this schedule of the Sanjan Karma. Then Suddhiyo, I told you the power Suddhi 30, 20 and 10. The more action of Racing Karma. Additional drug, then we do these properties of the herbs, they do the liquefy the dosa, then they do the anu then they detected from the dhatu and jala and pradhan dravya, that is written Vedas. Shirodhara, as I told you, the stress is the main factor in psoriasis. So Shirodhara is very good Panchakarma treatment for elevating the stress. So there are different oils, Shirodhara given. This Acharya Bhagavad given the references that the name Abhyanga, Sheikh, Pichu and Basti. Only not Shirodhara, you can do the Pichu also. In the OPD basis, you can do this. You don't need the very large setup for do the Panchakarma. And the OPD basis also, these things can be done. Some Siddha tel, and like Asagandha tel, Brahmi tel, which is elevating the stress, you can giving Pichu in your clinic also. And there is Takradhara, very popular in treatment of psoriasis. We could do this
after Purva Karma and Pradhan Karma, we do Paschat Karma also in the Takra Dhara. Takri means buttermilk. Takri means butter. उसकी धारा बनाते हैं पूरी बॉडी में उसको परिशेक करते हैं. किसी को बढ़ा देते हैं फिर डिपेंडेंट कहाँ पे उसकी रीजन्स हैं. तो 10 लीटर छाछ में उस पेशेंट को बढ़ाते भी हैं. तो उसके 3 ग्राम हो गया है वो. तो अगर चेस्ट पे, बैक पे, एक्सटेंसिव फुट पे, लिम्स हर जगह, तो we dip the patient in the takra. The takra, you know, is a basic common thing. We do add the rasna and musta also, and amalki. They have this purification process also, and this the cooling effect also. In psoriasis, sometimes if they turn on, then there's some burning also. So 30 to 45 minutes time, and 14 days course must be given for takradhara. There are some differences given. If anybody want to refer, please what I have discussed, all is mentioned here. And again, giving thanks to organizer Nilesh Bhai, Yogesh ji, and Dr. Piyush Juneja for giving this opportunity to share my views here. Thanks and one and all. Love Ayurveda and live Ayurveda. Thank you very much. Thank you, sir. It was really a wonderful lecture. Hope all the practitioners, after listening this, you can easily treat your psoriasis patients. Thank you, sir. Now, another lecture, what we are going to hear, our next speaker. एक कहावत है हिंदी में कि बस नाम ही काफी है. सो हम और आप यहाँ जो बैठे हैं, हमारे लिए एक नाम ही काफी है. डॉक्टर नीलेश जोशी सर. Please welcome Dr. Nilesh Joshi sir on the dais. Dr. Nilesh Joshi sir has completed his BMS from Jamnagar. Sir has done his MD Sharia, IGPT and RA Jamnagar. Sir is the CA of Devangi Hospital Malaris, which is NABH accredited. Sir has received Sushruta Award by Director of Ayush Maharashtra State. Sir is the founder president of AAP and managing trustee. He is a resource person in various national proctology conferences. Presented exclusive war and potential sinus and rectovaginal fistulas in various national and international conferences. Sir is a pillar of AAP, and he is the person due to which AAP had conducted more than dozens of international conferences from JW Marriott to Taj Hotel. Hope you all have known it. A big warm welcome to Dr. Nilesh Joshi sir. His broad vision and his mission and his guidelines is the actual success of AAP. So many people ask कि team AAP इतने जल्दी ये सब कैसे कर लेती है? So I would like to tell he is the person behind this. And not only that, today we all are here in such a short notice. All credit goes to this person only. And he is the person who had actually dreamed something very unique. Dr. Nilesh Joshi sir is the person who had invented and he had tried to find out that an Ayurvedic practitioner who is doing Ayurveda or a Panchakarma should also be included in what you call a medical negligence and a medical act. So there is a bond which he is running for last 21 years where if something goes wrong due to that bond, we can get felicitated by that bond also. I will ask Dr. Nilesh Joshi sir to conclude this. Thank you, Yogesh bhai, for your very long introduction. Friends, आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा टॉपिक क्यों? Pulse of prospects and challenges for Ayurvedic physician and surgeon. जैसे हम सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम हमको करना है, हमारे पास जब ये चैलेंज आई तो हमको लगा कि ये 10 दिन में हम कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे. वर्किंग डेज में इतने सारे डॉक्टर्स को जमा करना, I felt it would be little difficult, and I thought that let me talk something which is useful to the younger generation or the people who are sitting over here and are likely to have their younger generation in Ayurveda. Let them enlighten that what are the prospects and challenges in the field of Ayurveda. Friends,
in 2014, we have got a new Prime Minister. A Prime Minister who believes in promoting the Indian culture and heritage, and whatever the original things are there of India is to be promoted across the globe, let it be yoga or Ayurveda too. So, if you will see that the budget allocation in the year 2015 was mere 400 crore rupees, which has increased to 2021 2,200 crore, and in 2022 3,000 crore, and in 2023 3,600 crore. So, what I mean to say that in 67 years of independence, the budget of Ayurveda was near 400 crores it has reached. Whereas in next 9 years, it has become ninefold from 400 crore to 3,600 crore rupees. And the person who inspires to have that budgetary allocation is Vaidya Rajesh Kotecha. Because if you do something, then only you can ask for the money. If you don't do anything, then definitely there won't be in your pocket. So when budget increases, the entire industry has got its own impact. So business of pharmacy has also increased. How do I say? I will give you only one example. Have you ever heard that what could be the quarterly profit of Dabur Pharmaceutical Company? Can anybody can guess what is the quarterly profit of Dabur? Anybody else? It is 550 crore rupees quarterly. So 2,200 crore rupees is the profit of Dabur alone. Similarly, Himalaya, Durpapeshwar, Vaidnath, all these big shots have grown. So more number of pharmacies have come into the field, and accordingly, many number of new colleges have come. And once so many new colleges are coming, you know that so many new scholars and graduates from Ayurveda comes. Of course, this is an opportunity, and inversely, there is a challenge. Challenge is that similarly, what he is doing for Ayurveda, he is doing for medical science also. So from 56,000 medical seats to it is 1,04,000 medical seats now in just 9 years of span. So there is an opportunity for the Ayurvedic graduates, as well as there is a challenge for the Ayurvedic graduates. So what are the scopes for these Ayurvedic graduates? Previously we used to say that no, with what goal the practitioner goes into the Ayurveda. Their mere goal was to get an admission in Ayurveda and to start an Ayurvedic practice. 95% of the admissions were with these views only. But I suppose it is changing. The scenario is changing. Why? One of the things, what are you witnessing over here? That the Dr. Piyush Juneja is also an Ayurvedic graduate. Now he is having its startup. This is an era of startup. So
this is one of the scope that if you have an idea and if you incorporate it with the IT world, you can have such type of the things uh, which probably no Ayurvedic graduate have thought of before 20 years. Then, what happens that if the BM I have done graduation, I will do general practice. If I have done post graduation, I will become a teacher. No, that is what the general goal of the Ayurvedic doctors, and they all were looking for the government jobs. But now newer and newer things have come up. One thing is that insurance sector has come. Now, many of the people may be knowing or understanding that in insurance sector, our doctors are working as a scrutinizer. Once you have done some courses and if you go, all the people are saying that yeah, जितने भी claim settle करने के लिए उसके लिए हमारे BHMS और BMS डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ पे कोई MBBS और ये डॉक्टर मिलते नहीं है. तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है. मगर मैं आपको बताऊं कि आज के समय में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है और गवर्नमेंट PSU कंपनीज है, उसमें से करीब 20 से 25 इंश्योरेंस कंपनी रहेगी. उसमें से 4 कंपनी के CEO आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स हैं. कैन यू बिलीव दिस? मतलब कि आप आयुर्वेद के साथ साथ में और कुछ पढ़ाई करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, तो जो एक MBBS और MD डॉक्टर जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेते हैं वो हेड बनते हैं. तो आज 4 कंपनी के जो हेड्स है वो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स है. दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड बोन. दूसरा, काफी लोग BMS MD करके मैनेजमेंट कोर्सेज में जाते हैं. आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है उसके ऊपर से आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं. साल भर का IIM का कोर्स कर लेगा. तो अगर आप IIM जैसी कोई भी कंपनी से या फॉरेन के कोई हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में से अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज करके आते हैं, तो आप बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है उनके आप CEO बन सकते हैं. और काफी लोग है भी. नॉट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में तो काफी लोग हैं, मगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये अपॉर्चुनिटी अभी खुल रही है. नेक्स्ट स्कोप इज ग्रुप हॉस्पिटल प्रैक्टिस. काफी सारे अपने डॉक्टर्स जो है वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, मगर 2, 5, 10 डॉक्टर मिलके एक बड़ा हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल बनाते हैं और उसको चलाते हैं. दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. FMCG सेक्टर, जो कि पहले FMCG बोलेगा तो बस यूनिलीवर सबसे बड़ा नाम माना जाता है. अगर आज हर आयुर्वेदिक कंपनी FMCG प्रोडक्ट में जुड़ी है और शायद पतंजलि और डाबर, ये जो लोग इनका इतना प्रॉफिट है वो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी से ज्यादा FMCG में से. बराबर है. तो हम ये शुरू कैसे कर सके? तो छोटे स्केल पे मैंने काफी अपने आयुर्वेदिक कलीग्स को मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे स्केल पे शैम्पू बनाते हैं, मेहंदी बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं. ऐसी छोटी छोटी चीजें बना के धीरे धीरे ग्रो होके वो एक 10, 20, 50 लाख का एक जो टर्नओवर करने वाले लोग हैं वो 2, 5, 10 साल में करोड़ों में टर्नओवर करने लगते हैं.
तो ये भी एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओनली थिंग कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ में जो जुड़े हुए जो लोगों की जरूरत है उन लोगों को आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो ये भी चीज हो सकती है। एंड जिसकी ख्वाहिश मेन आयुर्वेद में ही है और आयुर्वेद में ही आगे बढ़ने की है, उनके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो समन चिकित्सक बनने की अपॉर्चुनिटी है। पहले के जमाने में लोग प्रैक्टिस करते थे तो क्या करते थे, कोई भी एक छोटी दुकान रहेगी, वो दुकान के अंदर अपना वैद्य बैठता रहेगा, उसका 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो बैठता है और उसमें से वो शॉप वाला कमीशन देता है और वो कमीशन से उसका घर चलता है। मगर one cannot progress from such type of the practice. I suppose it has almost reduced to 50%, and in next 5-10 years I suppose जो soft practice है वो शायद बंद ही हो जाए। दिलीप भाई उसके विटनेस है, वो उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द पंचकर्म, नेक्स्ट इज दीक्षा सूत्र। नाउ आपको पंचकर्म सेटअप करना है या क्षार सूत्र सेटअप करना है, आप ग्रेजुएट हो गया है, आपके पास पैसा तो है नहीं, बराबर है। कोई भी ज्यादातर करके वो चाहे कितना भी बड़ा कंसल्टेंट हो, उनके पास पैसा तो नहीं रहता है। वो पढ़ाई करके आ गया, मेरे को हॉस्पिटल सेटअप डालना है या मेरे को क्लिनिक डालना है, तो पैसा किधर है मेरे पास। तो पहले ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पैसा कहां से आना है, पैसा कोई देने के लिए तैयार नहीं था आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को। नाउ banks have come forward, various government scheme has come, particularly MSME जो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, वो भी फंडिंग करने के लिए तैयार है। आप कौन से लेवल का काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो फंडिंग करने के लिए तैयार है। तो बैंक से, गवर्नमेंट स्कीम से पैसा लेके आपका खुद का सेटअप डालो, नहीं कि किसी की दुकान में बैठ के, दिलीप भाई बुरा मत मानना, छोटा छोटा पैसा कमाओ। आज की जरूरत है वो बड़े पैसे की है, और बड़ा पैसा कमाना है तो इतना डेयरिंग करना पड़ेगा, और ये अपॉर्चुनिटी है तो हमको उसको लेनी चाहिए। मगर ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए एक और चीज आई है, हम सब लोग पढ़ाई करके आए हैं तो हम स्किल तो है ही है, बराबर है ना। मगर पहले अपनी पब्लिसिटी करनी है तो बहुत खर्चा लगता था, या कैसे करनी है वो मालूम ही नहीं था। मगर आज के जमाने में एक ऐसा युग आया है कि सब लोग सोशल मीडिया का इतना यूज करते हैं कि कई बार मैं ये देखता हूं कि शायद मेरे को नहीं पहचानते हैं, उतने सारे यंग डॉक्टर्स को पहचानते हैं। क्यों? उनकी प्रैक्टिस चलती है या नहीं चलती है एक अलग बात है, मगर उसका नाम ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव है, उनको मालूम है कि गूगल का रेटिंग कैसा लेना जिससे मेरा 2 स्टार 3 स्टार का 4 स्टार 5 स्टार बन जाए, जिससे जो लोग स्टार देख के आज के यंग जनरेशन आती है, वो लोग अट्रैक्ट होके वहां पे आए और प्रैक्टिस अपनी चले। तो ये मास मीडिया की जो सहूलियत है वो ग्रेट बोन है, एंड एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर तो मुफ्त में है। तो ये सब चीजों का उपयोग करके मेरे को लगता है कि हम अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से चला सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, गवर्नमेंट खुद बोलती है हर घर आयुर्वेद, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बोलता है गेटवे ऑफ आयुर्वेद। The tagline of Association of Ayurvedic Practitioners is F1 Gateway of Ayurveda। तो सरकार तो अभी तक हर घर आयुर्वेद की बात करती है, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ये बोलता है कि हमको पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना है।
तो हर घर आयुर्वेद से क्या होता है, लोकल पॉपुलेशन का एक्सेप्टेंस होता है, मगर गेटवे ऑफ आयुर्वेदा से ग्लोबल पॉपुलेशन से हमारी एक्सेप्टेंस आती है। तो थिंक बिग, थिंक ड्रीम। सो समन एंड शोधन चिकित्सा जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल चीज है। तो आपको प्रॉस्पर करना है तो समन शोधन चिकित्सा, आज पंचकर्मा और मेडिसिन वर्ल्ड वाइड ओवरऑल इन अ डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे इज एक्सेप्टेबल। आप बोल सकते हैं कि मेडिसिन के रूप में शायद एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, तो फूड के रूप में एक्सेप्टेबल है और पूरे वर्ल्ड में लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जरी। सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो क्षार सूत्र एक ऐसी चीज है कि जो लोकली हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, ग्लोबली नोवेयर इट इज एक्सेप्टेबल टू प्रैक्टिस। बाकी चलता है मगर एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप सर्जरी करो जाके। मगर आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं कि आज के समय में हमारे शल्य के बच्चे, जो मेरे समय का था, वो टाइम पे शल्य की जो प्रैक्टिस थी वो 4 सूत्र तक सीमित रह गई थी। अगर आजकल के बच्चे, आपको मालूम नहीं है तो मैं बताता हूँ कि आजकल के बच्चे जनरल सर्जरीज तो सब करते ही है, मगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं। और अभी इंस्टीट्यूट्स में भी ये सर्जरीज चालू हुई है। टाइम विल कम दैट आयुर्वेदिक सर्जन will be at par with the general surgeon. And when time comes, I suppose it may happen that our children will learn robotic surgery too. हमारे पास कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि हम चीज छोटी लिखते हैं। ये लिखते हैं कि नाड़ी यंत्र, अभी नाड़ी यंत्र से लेप्रोस्कोप हो जाता है। कोई बोलेगा कि आपके शास्त्र में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का उल्लेख किधर है? अरे भाई, हमारे शास्त्र में बताया है नाड़ी यंत्र है, तो नाड़ी यंत्र से आप सर्जरी कर सकते हैं, बराबर ना? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज मैं जानता हूं तब तक महाराष्ट्र में कम से कम 12 से 15 आयुर्वेदिक सर्जन है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो फील्ड्स आर ओपनिंग, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इसका परिणाम क्या है कि आज के समय में जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आता है, उसमें एक सर्वे में यह चीज आई है कि 1 लाख रुपया से कम कमाने वाले कितने डॉक्टर्स हैं? तो 10% से भी कम डॉक्टर ऐसे हैं कि जो 1 लाख रुपया से कम कमाते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। 70% प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया से 4 लाख रुपया तक कमाते हैं, और 10% प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो 4 लाख रुपया से भी ज्यादा कमाते हैं पर मंथ। व्हाट एम आई टॉकिंग? यस। तो एक प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से, ये सर्वे है, मेरा खुद का डेटा नहीं है, हाँ, किसी ने सर्वे किया हुआ है, मेरे को बताया है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बट मैं भी फील्ड में हूं, मैं कम से कम 2 से 2,500 डॉक्टर्स के टच में हूं, तो मैं मानता हूं कि ये सर्वे ओवरऑल सही है। When we talk about opportunities, let us talk about challenges. Challenges में ये है कि हमको NABH और इंश्योरेंस फैसिलिटीज जो है वो, अभी NABH इंश्योरेंस लेने के लिए NABH होना कंपलसरी हो गया है, और NABH लेना है तो ही आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। तो उसके लिए 2 है, एक सेंटर है, आप छोटा सा सेंटर चालू करो, उनका NABH एक्रेडिटेशन कराओ, और एक आप हॉस्पिटल खोलो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसका एक्रेडिटेशन कराओ। अभी समय क्या कैसे चेंज होता है कि 2010 के पहले सब कवरेज, मतलब 100% आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का कवरेज था। 10% 2010 के बाद में जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का कवरेज है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया था। मगर इस गवर्नमेंट आने के बाद में जो हम लोगों ने इनिशिएशन लिया,
2018 में IRDA में मैं, गवर्नमेंट और IRDA और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के हेड आए थे, तब से वो कवरेज में चेंजेस हुआ एंड नाउ majority of the insurance companies are giving the this reimbursement to our patients provided they are NABH accredited. So these are the, of course, opportunities and challenges. So what do I at the end of the day say is कि ये जो NABH के नॉर्म्स जो है और इंश्योरेंस कवरेज के नॉर्म्स जो है वो काफी स्टिंजेंट और स्ट्रिक्ट है, उसको चेंजेस करने की काफी जरूरत है। और जैसे सर ने बराबर सही समय पे एंट्री मारी है, तो मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है उनको हमको समझाना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करने के लिए जो आपने जो नॉर्म्स बनाए हैं उसमें काफी कुछ चेंजेस की जरूरत है, और अगर वो चेंजेस हो जाएंगे तो हमारे बच्चे जो भी पीछे बैठे हुए हैं उनका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for such a unique lecture. It was really a pleasure to listen this. All the students who are sitting behind might be had awake after sleep. It can be happened, and mark my words, this could happen. Now, after this lecture, we are having our another session, that is our inaugural function. So for that, I would request Dr. Reddy sir to be on the dais, please. Dr. Mahesh Harith sir, Dr. Nilesh Doshi sir, Dr. Piyush Juneja sir, Dr. Sanjay Wani sir, and Dr. Dilip Trivedi. Please be on the dais. First, we will have a deep prajwalan. आविर्बभूव कलशं दधदर्णवाद्यः पीयूषपूर्णमरात्मकृते सुराणम् रोक्चालजीर्णजनितः प्रशंसो धन्वन्तरित भगवान् भविकाय भूयात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या पुण्येन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रप्रता या वीणा वरदण्डमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रकृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शुभं करोतु कल्याणमारोग्यमनुसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।
Hello. I request all the dignitaries to be on the dais, please. Thank you, all the dignitaries. Now we are going to felicitate them. First, I will ask Dr. Vinod Pandey sir to please felicitate Dr. Reddy sir. Dr. Vinod Pandey sir, please. Dr. Anand Tendulkar, Dr. Nilay Doshi sir. Dr. Bela Bhatt ma'am to Dr. Hanit sir. Dr. Jasmine Wani ma'am to Dr. Piyush Juneja sir. Dr. Amita Ben Yagnik, Civil Felicitate Dr. Wani sir. Dr. Vikas Dubey sir, he will felicitate Dr. Dilip Trivedi sir. Thank you, all of you. Now I will request our President Dr. Sanjay Wani sir to please have his words. Okay. नमस्ते। स्टेज पर उपस्थित मेरे सहयोगी और फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर निलेश जोशी, डॉक्टर रेड्डी सर, डॉक्टर पीयूष जुनेजा, डॉक्टर महेश हरे एंड डॉक्टर दिलीप त्रिवेदी, और मेरे सहयोगी विद्वान वैद्य और जिनको पुरस्कार पाने वाले मेरे सभी साथी, देवी और सज्जनों, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जुनेजा सर ने मुझे आज बहुत खुशी हो रही है सर कि मेरे प्रेसिडेंट काल में एक्सेप्ट रेगुलर शेविंग दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम है जो इवेंट हो रहा है जो इंडिया हेम्प एक्सपो के साथ हो रहा है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, I will give you a brief introduction of AAP. It was established in 1993. In 30 years, we organized more than 1,000 CME in
total. We organize biannually national and international conference in Mumbai at Kokilabin Hospital, JW Marriott, and Taj Mahal Hotel also. We conducted 4 integrated course. First in dermatology, that is 4-month course, and second is proctology, that is 2-month course, and diabetes 3-month course. And in COVID era that times we have organized online courses, that is nephrology. And in that course, near about 10,000 doctors have attended all over India and globally also, some Nepal and Kenya also. The only one organization which provide professional indemnity agreements with insurance company in the country since 2002 years. हमारा आपका कार्य है जनता में आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करना, विश्व का कल्याण करना, और आयुर्वेदिक प्रभाव विश्व का कल्याण करने का आयुर्वेद एक प्रभावी माध्यम है। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया। इसका मतलब सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। हर घर में आयुर्वेद प्रसार करने के लिए ये भी एक ऑनलाइन एक चैनल चालू करने वाली है, जहां हमारे वैद्य सामान्य जनता में आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले हैं। भविष्य हम इंडिया हेम्प एक्सपो के साथ जुड़े रहेंगे। सर आप कभी भी बुलाइए, हम वी आर ऑलवेज आपके साथ ही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Now I will request Dr. Piyush Juneja, sir, to have his words. Thank you so much. First of all, special thanks to the Director Ayurveda in Maharashtra, Dr. Reddy sir, for giving us so much of time, sir. Really appreciate it, sir. Thank you so much. He is such a nice person. He visited all the stalls personally to each stall. He understood the entire. And I request all of you that you are coming. I met, I think, Dr. Doshi a couple of weeks back, and I really liked about his approach, his mindset, that the entire fraternity should learn something new. So he understood with me what exactly people are doing, and immediately he checked with the association that we can do or not. And thank you so much again, sir, Dr. Nilesh Doshi sir. Thank you so much for this support, this mindset. The mindset which I understood is Dr. Doshi want all of you to come here and see what exactly is going on. And our idea and our aim of doing this India Hemp Expo, and by the way, to all the other senior doctors, sorry, I'm not connected right now directly with each one of you. I will try to remember names in the future sessions as more we will connect, because I think we are meeting around 3 years ago. We met in January, if you remember, 2020 in the NESCO Arogya Fest. So I was also there. My platform just launched. Dhananjay is there. He was managing the entire event. So I remember on that event, I came to know about your association first time. It was an excellent event. So many doctors were there. So this industry is still very small. So that's why we are able to do these kind of setups right now. But gradually we'll be growing, and next time we'll have bigger setup for all your members. Although I remember Dr. Doshi and I were discussing, and he was very confused कि Friday है, पता नहीं practitioners अपना practice छोड़ के आएंगे या नहीं आएंगे event में, इतना हो भी पाएगा, चलो कुछ students को involve कर लेंगे. But I think आप सबका जो enthusiasm and your association is so good, so professionally managed. I have worked with so many associations. मैं खुद भी member हूँ और रहा हूँ काफी सारी associations का आयुर्वेदा में. But I really appreciate when अपनी team से feedback मिला मेरे को, and the way you people are working with a very professional mindset. So I really like that, and thank you again for your support, sir. Thank you so much. मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा. मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा. I think mostly you are practitioners here, you are doctors, and I'm Dr. Piyush Juneja, Piyush Juneja. We founded this platform, IndianVaidyas.com, few years back. I don't know how many you are aware about that platform. That is one of the largest platform of Ayurveda doctors. In fact, last year we started one project with 100 doctors across India, and we are growing them in their business, in their clinic, in their practice. We think that a clinician should also think as an entrepreneur. I started my clinic in 2018 January in Ghaziabad, one of the suburbs of Delhi, as you can say. जैसे यहाँ पर मुंबई है तो साउथ मुंबई है, ऊपर जाएंगे तो फिर बोरीवली, कांदीवली या थाने, ऐसे जिसको हम suburbs of मुंबई बोलते हैं. तो ऐसी गाजियाबाद is just to the Delhi border. And within 3 years from zero,
we have touched 1 CR turnover, which is still very small as compared to Mumbai, but very big as compared to other cities. I know many of you are already in that level. I have seen a setup of Dr. Doshi, but still his opinion was all yes, few of them are, but not many of them. So we need to grow now together. I have several doctors from that project sitting here. If just for a second you can just stand from your positions. So that is a 100 CR project, and we have launched. So thank you. We have all these doctors, Dr. Puneet from Hathras, Dr. Vinod. All these are our Dr. Rashmi is there from Thane, by the way. So all these are our pillars, our strength in that initiative, and now we are replicating to all of you. So I request all of you ki after this session, please visit all the stalls, because many doctors across India have incorporated these companies, these medicines, अभी pain management पे, sleep पे, insomnia पे, skin पे, आपको काफी सारे indications पे there are so many solutions available. Classical Ayurveda medicine जिसमें से विजय या भांग को निकाल दिया गया था to decrease the potency. Now again companies are launching त्रिलोक्य विजयवती, महाकामेश्वर मोदक, जाति फलादी, बिलवादी, आपको ऐसे काफी सारी क्लासिकल फॉर्मुलेशन, सर्पगंधावटी, ऐसे काफी सारी फॉर्मुलेशंस आपको इस एक्सपो में अभी मिलेंगी उन कंपनीज का. And you can always ask as a doctor the samples. They have all the approvals. You have the authority. Recently, we had a discussion with NCISM as well. So, and we have filed an RTI to the narcotics department. So the seeds and leaves are out of the purview of NDPS Act. And if any medicine is prepared from seeds and leaves, as a BMS doctor, as an Ayurveda doctor, I have written that in the RTI. So we are allowed to practice. Just you need to maintain the documentation, maintain the prescription. It is a prescription based drug. It is in schedule E1 of Ayurveda. So every patient you should have a prescription, a record. You should have the sales and purchase documents. Then nobody will have an issue. Unless or until you have records and you are putting it to your patients as a therapeutic or as a disease healing treatment, nobody has an issue. They have issue for the recreational, which we are not promoting, and it is not ethical right now, right? So that we need to understand. That is a clarity we need to as a clinician, and we have seen in our practice and the doctors who are adopting, as patients are getting benefited. First day you can replace painkillers, steroids, in like antidepressants, sedatives, all these IBS, chronic diseases, autoimmune disorders. You can replace first day the dose of counterpart allopathic system of medicine which they are taking, and then you are doing, if you are Panchkarma specialist, if you are like any other skill, Agni Karma, Jaloka, sir is doing the surgery. So that is a separate story. But for at least managing of the symptoms, for some time, if you are putting them on these kind of medicines, they will have the confidence. And then your mainstream Ayurveda, your standard of care, whatever you are doing, will come in picture, or along with that also you can start. And these herbs are also have the potential of healing. These are also known as Yogvahi in Ayurveda, means it has as a catalyst to give you the treatment in a shorter, and so many things are there. Tomorrow we have a very exciting session. If any one of you can pull sometime tomorrow. So two very senior doctors are coming around 2 p.m. Dr. Pradeep Mahajan and Dr. Tahir. Both are exhaustively working on medical cannabis. So you can get to know about them as well tomorrow 2 o'clock. And the entire session is there from 2 to 5. And morning we are doing the manufacturing session. So मेरा आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आज आप यहाँ पे आए हैं, आफ्टर द सेशन थोड़ा सा टाइम निकाल के, आई नो आपको प्रैक्टिस में वापस जाना होगा अपने सेटअप्स में. आई कंप्लीटली एग्री. मेरा भी इवनिंग प्रैक्टिस है. संडे को मैं यहाँ से करके संडे पूरे दिन हमने ओपन किया क्लिनिक, सो दैट वी कैन हैव पेशेंट्स. अगर थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, अदरवाइज कल भी ओपन है पूरा, सुबह मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक है. एटलीस्ट सारी कंपनीज को एक बार विजिट जरूर करें, समझे व्हाट दे आर डूइंग, and your patients and you will be getting benefited in many aspects. That I can say after practicing 3 years of medical cannabis. And thank you so much again for your time, for your participation in our event. Looking forward to have many more event with your association. Sir, हमने बात करा है काफी कंपनी से, तो मूविंग फर्दर आप जो भी अपनी CMEs प्लान करें, जो भी अपने एसोसिएशन लेवल पे प्लान करें, please let us know. We are always there to support you in all the aspects in terms of any event you are planning. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thanks. Thank you, sir, for your kind words. Now I will request our founder president, Dr. Nilesh Joshi, sir, to have his thoughts on this process. Good afternoon, friends. Rather putting my words
I should be humble. Why am I saying so? I welcome Director Dr. K. Rajesh Reddy sir, Dr. Mahesh Harith sir, पीयूष जुनेजा जी, डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, हमारे परम मित्र डॉक्टर पवन शर्मा जी, डॉक्टर पवार सर, और यहाँ पे उपस्थित एपी के मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, जिसको डॉक्टर वाणी ने बताया कि ये एसोसिएशन क्या है, तो उसके एडवांटेजेस लेना है तो उसके मेंबर बनेंगे, ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे जुनेजा जी ने बताया कि 15 दिन पहले मेरे को 12-13 दिन मिले, मेरे को बताया कि वास्तव में मैं ये कहूंगा कि 3 महीने पहले मेरे को माखरिया जी ने फोन किया था और मैंने तभी उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि जो भी है मेरे से डायरेक्टली बात करे, इन बिटवीन कोई मेरे से बात नहीं करे। आई थैंक अपना धनंजय जी कि आपने मेरे वर्ड्स रखे और डायरेक्टली जुनेजा जी मेरे को मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आने के बाद में हमको लगा कि क्या करेंगे, 12-13 दिन में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। And I put forward my words in front of the committee. I thank all my committee members who have taken up this challenge and make this event a grand success. मगर वो कब सक्सेस होगा? जब रेड्डी सर, जो डायरेक्टर भी है और मेरे परम मित्र भी है, हरीश जी, अनिल शुक्ला जी और मेरे टीम मेंबर्स, सब लोगों ने ये लेक्चर्स लेने के लिए इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हाँ कही, इसलिए मैं हम लोग का आभारी हूँ। और आप सब लोग, आप फ्राइडे वर्किंग डे की प्रैक्टिस छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आए, आई हैव नेवर इमेजिन्ड सो। मेरे को बहुत हिचकिचाहट था और हमको ऐसा लगा कि हमको कॉलेज के साथ में कॉलेज को बोलना पड़ेगा कि आप कहीं से स्टूडेंट्स लेके आइए ताकि हमारा हॉल भरा रहे। I thank all of you प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे आए। Thank you so much. Thank you so much. With these words, जुनेजा जी, आपने जो हमको अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस एसोसिएशन के साथ आपने जुड़े रहने के लिए जो आपने बात कही उसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. I will request Dr. Harith, sir, please come to the dais and have some words. Dignitaries on the dais and off the dais, I thank the organizers. They invite me to speak some words here. My lecture is after this program. My lecture is there, so I will speak lots in that particular lecture session. But it's nice to see all these arrangements and how they are in very short period they have managed in very well. Thank you very much. Best of luck. Thank you, sir. Now I will request Dr. Neeraj Doshi sir and Sanjay Wani sir to felicitate Dr. Reddy sir with Sushruta Award. Please can I have Sushruta Award on the dais? Please a big round of applause.
So please have some words. एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की तरफ से और इंडियन विद्यास की तरफ से जो परम आदरणीय गुरु जी को सुश्रुत अवार्ड दिया गया है, वह आप सब लोग जानते हैं कि आज डायरेक्टरेट आयुष महाराष्ट्र स्टेट उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएस आयुर्वेद किया हुआ है. He is a PhD guide, postgraduate since 11 years. He is a postgraduate guide since 22 years, and he is a teacher since last 33 years. He has received a letter of appreciation for dedicated work done in R.A. Poddar Hospital during COVID-19 pandemic year by Honorable Governor of Maharashtra on 10th March 2022. During the COVID time, majority of the people and doctors were scared, whereas he was working tirelessly in managing the entire COVID session. He is a Senate member of MUHS. He is scientific advisory member of Medical Research Council, DMERE, Maharashtra. He is a principal investigator in ICMR in various studies. Appointed as co-opted member of Institutional Board of Studies for PG courses. He is a member of Ayurved PG Board, member of ex-PG Board, and various conferences and national and international conferences and seminars. I have seen him as a faculty member, as a operating faculty at various places, and he is always a key and resource person and has given a knowledge to the students. At the same time, let me tell you that he was course of card since I suppose last 16-17 years, 20 years. So in 20 years, he has trained, I suppose in every session, he has called me to deliver one lecture on one of the anorectal issue. And I have seen that almost all the sessions were having 50 students. So in 20 years, he was conducting two courses. So 20 into 2, 40 into 50. That is 2,000 practitioners here trained for Char Sutra across the globe. I suppose it is the biggest achievement than the awards. He has received the letter of appreciation for dedicated work done in, received Dhanvantri Award in 2022 by Nature Fit Pharma, Char Sutra Tadvidya Award, recipient from Department of Ayush Maharashtra State, and Lifetime Achievement Award and Best Doctor Award by Telugu Doctors Association. Oh, that's really surprising. Considering he is from that area, Government of Maharashtra. And Dhanvantri Puraskar 2022 award by Mumbai Vaidya Seva Sanstha. Dr. Shyam Sharma, the secretary of that organization, is also over here. So this is what Sir's achievement, and it's our pleasure to honor such a great personality with Susruta Award.
Now I request sir to say few words. Good evening, everybody. Dignitaries of the dais, respected Juneja ji, respected Trivedi ji, respected Adit ji, and respected Nilesh Joshi ji, and respected Dilip Trivedi ji, and respected Vani ji, and respected all AYUSH practitioners since last they are working as a practice, they are doing as a general practice since last 30 years. And first of all, I will take opportunity to congratulation to organizers because of these organizations now completed 30 years since last 30 years Ayurvedic Practitioners Association, and they are doing wonder for Ayurveda and various activities. This is propagation of Ayurveda, and is need to do now to propagation of Ayurveda through the practitioners of Mumbai, yeah, as well as through the practitioners of Ayush. And I welcome on this occasion all of you because of what I have seen. This is a show must go on like this. I have seen through the Juneja ji. This is the way of organizing so many stalls. I wonder because of this type of organization, this type of function organized on behalf of Ayush practitioners. That's why I must again congratulate to Ayurvedic practitioners to continue this type of conducting CMBs for various Ayush students, various Ayush practitioners, and various teachers also. Because of recently, 8 years back, we have organized one national seminar on like this lifestyle disorders at DY, DY school, Navi Mumbai. And again, I will thank you to organizers because I'm receiving a Dhanvantri award, sorry, Sushrut award. Because of, I let you know one thing only. Since last 30 years, I am working in surgical field. Since last 30 years. And as I said, Joshiji, because of since last, I have trained more than 5,000 students in anorectal specialty, and they can do upgrade their knowledge and they can do self delivery system. Yeah, they can do Ayurvedic practice in anorectal diseases. That's why I have received this Shushrut award. Uh, because of see this, I have received so many awards. But see, this is the end of the day. Work is more important. That's why I give you message to all. Do continue work because of no need of any to take मैं काम कर रहा हूँ मगर मुझे कुछ ऐसा सफलता नहीं मिल रही है ऐसा सोचो मत. You continue your work and continue what you want to do. You continue your work and you take lot of efforts. And एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे काम के वजह से मुझे शासकीय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे बुला के आयुष संचालक पद का कार्यभार दिया. ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हूं मैं आपके सामने बिकॉज आप निरंतर काम करते रहिए. बिल्कुल कभी ना कभी इस काम के लिए आपको सफलता मिलेगी. ये उदाहरण ये मेरा है बिकॉज ऑफ मुझे कुछ मालूम भी नहीं था मुझे ये आयुष संचालक का पद ये कार्यभार देंगे बिकॉज ऑफ ओनली फॉर वर्क बिकॉज ऑफ सी एक ध्यान में रखने का क्योंकि मैंने 2 साल से उधर में कोविड पैंडेमिक में आप सिचुएशन देखा नहीं है. 200 बेड का हॉस्पिटल था हमारे पास और पूरा वैक्सीनेशन सेंटर ये हमने जो तरीके से चलाया वो उसका गवर्नमेंट ने रिकग्निशन किया. मुझे गवर्नर की तरफ से खुद फोन आया था आप आइए आपका हमको वेरिफिकेशन करना है. इसका मतलब ऐसा है कि उन्होंने रिकग्निशन किया मेरा वर्क का. और वैसे ही हमारे मित्र है जो जोशी जी मेरे को बहुत साल से जानते हैं. वानी जी मेरे पास आए थे शास्त्र कोर्स के लिए. उन्होंने 1 मंथ का ट्रेनिंग भी किया
और उन्होंने भी ट्रेनिंग किया हमारे, तो इसलिए और देखो उन्होंने भी, अरे मेरे बहुत सारे हमारे मैंने पहचान भी नहीं पाया उनको, बिकॉज हमने जो ट्रेन किया वो उनका एक ब्रेड बटर करके हमने विद्यार्थियों को सिखाते हैं, और ये ब्रेड बटर उनका लाइफ में उपयोग होता है। इतना ही मैं मैसेज देता हूँ। आप मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, मुझे यहाँ चीफ गेस्ट करके, गेस्ट ऑफ ऑनर करके और एक सुश्रुत अवार्ड करके जो इनविटेशन किया, मैंने ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं, और आप ही सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और फिर से एक बार जय जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद, जय प्रैक्टिशनर्स। Thank you, sir, for giving your valuable time and having such a sweet words for us. I will ask Dr. Dilip Trivedi, sir, to have some words. मंचस्थ उपस्थित रेड्डी सर, डॉक्टर दिलेश जोशी, डॉक्टर पीयूष जुनेजा, डॉक्टर महेश हारित, डॉक्टर संजय वान, हम सबके आप सभी के आभारी हैं। रेड्डी सर अपने व्यस्त समय से इतना समय निकाल के शांति से इस कार्यक्रम को उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, टाइम दिया, हम आपके खूब आभारी हैं। पीयूष जुनेजा जी, जिन्होंने पूरा सपोर्ट 10 दिन में, जैसे उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट किया था वैसे हमने उन्हों से एक्सपेक्ट किया था, और इट इज बीन म्यूचुअली डन। सो ये एक कार्यक्रम की सफलता, इसके पीछे दोनों का कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन रहा है। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर नीलेश जोशी एज ए ग्रेट लीडर, जिस तरह से उन्होंने हर कार्यक्रम करते आए हैं और कोऑर्डिनेशन किया है टीम से, और टीम ने जो पूरा आज काम करके इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनाया है। तो इस कार्यक्रम में और महेश हारित जी खास डीवाई पाटिल से जर्नी करके आए हैं यहाँ पर और लेक्चर भी दिया है। अनिल शुक्ला जी, जिन्होंने एक ही बार में हाँ बोल दिया, सीधा मैं आ रहा हूँ। हमारी बात हुई थी एक बार कि भाई लेक्चर लेना है। तो इस कार्यक्रम में और मंच पे उपस्थित रहने के लिए मैं हम आप सबके आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. This concludes our inaugural session. All the dignitaries are expected. Please have your seats. Big round of applause for all the dignitaries. Thank you, gentlemen. Now I will request Dr. Mahesh Kumar Harith sir to please have his lecture. Harith sir is a Dean of DY Patil School of Ayurveda from Navi Mumbai. Okay. Sorry to interrupt. Actually, Dr. Pawan Sharma needs to catch the flight, and he is straight away coming from Bhopal. He is a very senior. मैंने जैसे बताया starting वाले session में बताया था. I think आपको नहीं पता. He is the world record holder of largest number of highest number of virtual webinars in Ayurveda. So we want to felicitate him. कि सर को flight पे निकलना है. Can I have the moment and can I request Dr. Reddy please sir to felicitate Dr. Pawan Sharma sir. Thank you sir. मैं सभी से आह्वान करता हूं, 27 तारीख को हेम्प के लिए वेबिनार रखी है, आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। पीयूष जी हमारे गाइड हैं, पीयूष जी तो लीड लेंगे ही। पीयूष जी, सचिन जी, ये सभी हेम्प के ऊपर ही वेबिनार है। वो हमारी 591वीं वेबिनार होगी 3 साल में। जरूर जुड़ने की आशा रखता हूं आप सबसे। थैंक यू पीयूष जी फॉर दैट।
शर्मा जी मेरे सीनियर कलीग हैं और मेरे परम मित्र हैं। आप लोगों के शासन काल में महाराष्ट्र में बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ हेम्प के मैन्युफैक्चरर भी यहाँ बना पाएंगे और बेच पाएंगे। थैंक यू। देखिए मैं क्या कहूँ, मैं बिना उसके स्वार्थ की बात नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आऊँ तो यहाँ कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए हेम्प की। जय हो डायरेक्टर सर की जय हो। हरिओम। थैंक यू एवरीबॉडी। हरिओम। चलो थैंक यू। देवेश को बुलाओ, कहीं लैपटॉप वेयर इज ही हैज टू डू तो यही बोलिए पासवर्ड है उसका लैपटॉप। Who is the drive? Who is the organizers हैं यहाँ? So good afternoon to all. Once again, thanks to organizers for the invitations. This topic, I think it's a very new for you, all of you, and I think none of the heard about this topic. And this is the latest development in the medical science. So you can say this is the future topic, and the university I belongs, DY Patil University. All of you know this is the very advanced universities, and always we are stepping ahead with some others. Our teaching institutes is the one of the best institutes, and one addition is that today we have declared NAC A double plus graded from the NAC, and this is the highest grading from
any institutes in India. So that's standard we are maintaining in our institutes. Same time then when they called me about the presentations, I realized I have to introduce this topic in these platforms. And it's not your fault. We are having this simulation lab from 2013, but that was limited for only medical college. From the last 5 years, I'm working in these fields, in the simulations fields, and I'm the one of the pioneer in India to start this system for the Ayurvedic students and Ayurveda practitioners. What are the benefits of this? Why this is related to you peoples? That I will explain in my coming slides. I will finish within half an hour. I will not give much time to you. When in the terms of technology, whenever the technology is coming, every time others people thinking these are Ayurvedic fraternities and there is no relation between technologies. This is the simple general things are there. But friends, if you are looking our text, if you are looking the referring Charak Sanhita, if you are looking the Sushruta or Vagbhata, any of time, they have written thousands years back. If you are looking all these innovations the Acharya has done, were fabulous because they have used whatever they found around him, and it is easily available for each and every physician. For examples, they use Jaloka. For example, they use the Basti. They also standardize the Basti Netra. They also standardize the size of particular Netra. So these are the advanced technologies they have used in that time. But somehow these knowledge is thrown on the back seats, and we lost our man repo in the developments. But there is circle. Now this is our time. This is the time of Ayurveda, and in giving assurance in coming years, Ayurveda will again sit on the driving seats, or in India especially. And central government and other institutes are taking very much efforts for this purpose. But main things, Ayurveda can be popularized only through the physicians. Ayurveda is recognized in the society only through the physicians. So now time has come, physicians should be alert. Physicians should be enhance their knowledge. Physicians should be update their knowledge. What is it, the new in the market? And physicians, I ask, they should not afraid to using any new technologies, because the technology everyone can use. There is no this is only for the medical science, or this is cannot Ayurvedic physician cannot use that. This is not like that. And our students, we are providing our students the latest methodology in our institutes. So that fear and that inferiority complex should be gone, and now we should create the confidence in our physician. We should create the confidence our upcoming students, and we should create the confidence each and every one in same time in society also. How we can create this? We have to skill our whatever the quality we are having, and this is very important. Slowly I go on to my topic is divided in two types. First, I want to explain what is the simulations, because this is very new, and second in phase how this simulation is related to as a physician, and how you can benefit it on this stage on these simulations. Our founder chancellor believe this is the Jivan mantra, I can say. Ego is the death of life, death of ego is the real life. If everyone follow this mantra, I don't think they definitely they will succeed in their lives. Same time, our chancellor believes the education, healthcare, and the sports are the
main pillar of developing society. And luckily, we are related to all these three pillars. We are having the beautiful uh, DY Patil stadiums, and we are having the best of the teaching institutes, and same time we are having the best of hospitals. Our both hospital, allopathy hospital and Ayurvedic hospital, is NABH accredited, and we are the only hospital, Ayurvedic hospital, which is NABH accredited in the Mumbai region. So we always believe in the standardization. We always believe in some good works. Now I'm coming to the simulations. What is the simulations? So I just want to memorize your two, three scenes. Remember the ICU scene. There is semi-conscious or conscious person lying on bed. There is lots monitor is there, sisters, doctors, and lots of medicine we are putting in his body, and we are looking the response of that particular thing. So this is ICU setup there is. Second scene is that one person is met one accident. There's fractures in hand, and muscles tears, and lots of blood loss are there. These are basically seen we are regularly we can see in our casualty and emergency wards. And if these are scenes are come in front of the any Ayurvedic physicians, so maybe he or she not comfortable with the situation in these situations. They are not comfortable to treat such type of patients, and this is the big lacking area in our professions. This lacking should be fulfilled. For that purpose, the simulation training is the most important part, because the simulations gives the training before we going direct to the patients, rather than test on the direct on patients. We can practice first on simulators, then we can go on the patient. How I slowly open my all the subjects. So basic is the, if we are concise, the definition of the simulation is the miming of the release as closer as possible. Well, that maybe this is not real ICU, but all the ICU's scene is there. All ICU's equipments will be there, and you can get the trainings. We are having, especially in simulation labs, there are different chambers, and each and chambers conducting activities. We are having the maniquiz. मैनिक्विज जैसे आपने बचपन में रबड़ की गुड्डी गुड्डी से खेला होगा ना, वैसे एक बड़ा साइज का 6 फीट का एक गुड़िया समझ लीजिए, 6 फीट की गुड़िया है, और that गुड़िया is having the hardware and software, and some gases are there, and the development is like that. We can create any scenario, any clinical scenario. Suppose someone getting the heart attack, so we just put some group of students in that particular chamber. There is heart attack patient. Now handle it, and all the activities is recorded in our systems. After they complete that particular task, we show what they have done in the last 10 minutes, and ask them identify your faults. And after that, we tell them, you see, here you make faults, here you given the wrong medications, and if you do this, it will be better for that. So such trainings, if there is fractures or loss of bleedings are there, so the same time we are also telling them. So such trainings we are providing in this simulations lab. First simulation were used in the aviation fields. In airbags in America, one plane was landed on Hudson River. That first time, all the words सारा ऐसे चर्चा में आ गई कि प्लेन जो पानी में उतरा. That was happening the first time, and the inquiry commission is on. And when we take the history of that particular pilot, he is American सेना का एक pilot था वो, और that particular time
in America only, they have trained their pilots on the simulators. The maximum use of simulator was in the aviation. Later on, that introduced in the engineering, then finance, and then architecture also. And now it's the last 10 to 15 years, it is in the healthcare sciences. And after the aviation sector, it's the most useful in the healthcare sciences, because we can practice on these manicures, and after the root of the confidence, we can go on the patients. So like that only. These are the types of the some simulators. One is task force, then low fidelity, then high fidelity, then ultrasound. One by one I will define and then I will go ahead. Task force, what is the task trainer? When we are using one chamber and give tasks, practice of IV, practice of the catheterization, practice of the some airways managements, and practice of the incubations. So we give tasks and they can practice on that particular chamber and they can expert in that particular system. So this is task trainers. Then there is low fidelities. This is the basic. In this we are given training the CPR, ADE connections, then ECG implementations. So all training we are providing in this in these sections. And then high fidelity patients. So it's a mechanism ICU are there. Then there is advanced, we can say the whole heart related disease we can manage in this, all respiratory related, all the emergencies we can learn manage in these sections. And this is ultrasound simulators. Modern people believes this is the future stethoscope. In previously when this is introduced in the market, that it was required to sonography machine that it's working, but the sonography machine is coming under PCPNT and we cannot frequently use. So now they have innovated this. Now the simulator is a very small machine and we can easily carry that particular machine. There is no requirement of any sonography machines. So this in fraction of times you can confirm your diagnosis in your small clinics also. So this is very useful in coming days. There are surgical simulation. We can practice about endoscopy, bronchoscopy, laparoscopy on a specific chambers. So we can expert on these things. Then we are having the management. All the activities were recorded. All the data we have maintained to future references. Then this is the scene of our simulations lab. This is layout of the simulations lab. This is the journey of the we started in 2013 with the establishment of comprehensive medical simulation first in the country. In 2015 we introduced Lucina, and 2017 we have started some external workshop. To motto was to make more data to more clinical scenes. We want to create some data, and then 2018 we have expanded that simulation lab. In 2019 we signed one MOU with Mayo Clinics, and the Mayo now our lab is Mayo Clinic certified, and our trainers are certified by the Mayo Clinics. And in 2020 we become a most engaged simulation lab in India. And 2021 we have start online sessions because of the pandemic. And the motto behind that, at least our students or physicians learn how they can clinically define their particular patients. So I just want to show one video for the clarity. You just enjoy this video.
Video is not running. He is running. Nine. Visual technical thing. Yeah. I will start just now. These are different simulators which are using. The student can practice on this machine only. After practicing, they can be on patients. All are activities as real as you are feeling in patients. So basically, you get some idea about the simulations, how it is working, and how. Now the question is how this is related to you, and how you can benefit of this.
So we have designed various type of workshop. For examples, this is BLS, basic skills workshops. You can attend that one sessions, and one session is whole day from morning to evening. In whole day we teach you. End of the day you have to appear one exams, and after the exams you will get certificate and whole training recording. If you require, we can provide. Then the next stage, we have designed management of respiratory emergency workshops. Then obstructive emergencies, various type of deliveries we can design here, from normal to critical deliveries, and we can teach our students. And then mechanical ventilator workshop is there. All ICU setup is we can train through this. उसके सामने रखो थोड़ा. These are the templates when we are taking the history of that particular patients, and whatever we all things you have recorded. These are manicues that we are using in our simulations lab, and not only the medical science, each and every faculty are using at our university the simulations lab. So multiple use are there. These are the all trained by the Mayo clinics, and we are also hand holding with other institutes also. We have developed one simulation lab at Kolhapur. We have developed one simulation lab at Government Medical College at Bangalore. We have developed one Valley, Bangalore, and Sane Guruji Ayurvedic College, Pune. Then we have submit proposal for all India institutes in New Delhi. Now we have started some boot camps also. We are 7 days camps, and any medical college we are taking, and we have trained the students and physicians there. And these are the success mantra of our simulations lab. We believe 7S models. And these are the workshop, number of workshop you can see. More than around 18,000 workshops we have conducted in the last few years. And one, again, you can show one video, which is from the one of Ayurvedic college. There is technical glitch, I can't understand that. This is Sane Guruji Ayurvedic College, Pune. We have taken one workshop there.
So this is from my side. I have concised this topic because I know this is very new topic for all of you. And पहले दिन में बहुत सारी चीजें अगर आपको बताऊंगा तो you will not get. Here motto is behind this. I just want to give some idea that there is something simulations, there is something simulus based practice is there. If you people want to join these sessions, you have to contact to us, and minimum we require 15 to 20 people in one group, and you can join in any workshop. There is list of workshop are there. You can select any of workshop and you can come and you can enjoy this feast of knowledge. So this is from my side. If you can ask any questions regarding this, because maybe there is no question because you cannot understand, but there is so many questions because there is lots of confusions. Yeah, please. Yeah. Every time. Yes, yes. It's a depend on how many programs or clinical scenario we have installed in that particular. Yeah, thank you. The learning in this system is some different experience, and it's a feeling like we are working on the real patients. So that's something new for each and everyone. So whenever you got some time to please visit and you can get benefit and update your knowledge and update your skills. Any questions? Otherwise, I will concise. What is the charge of this course? This is the most important question. So, for each and every workshop, minimum there is 5,000 to 8,000 there is charge. Depend on which workshop you have chosen. But minimum we required 15 to 20 groups. Otherwise, we cannot handle this. That's it. Thank you. Thank you, sir. It was really a wonderful lecture. I will ask Dr. Deepak Rasa, sir, our secretary, to felicitate Dr. Sir. Please. It's a big round of applause to him. Thank you. I will ask our president, Dr. Sanjay Wani, sir, to give a trophy to Dr. Nilesh Doshi, sir. A big round of applause. ये हम लोग ने जो लेक्चर लिया ना हमने आपको जो सुनाया ना उसके लिए दिया I will ask our treasurer, Dr. Dilip Trivedi, sir, please come and felicitate his friend, Dr. Anil Shukla, sir. Now we have one more lecture that is from Dr. Tanuj Virbhan.
Good evening, everyone. Myself, Dr. Tanuj Khan from Ghaziabad, Delhi NCR. My topic is absence of Jativalation tablet in asthma. First of all, we start with causes of asthma. Allergens, atmospheric pollutants, food, cold, dry, heavy and comfortable foods, infections, stress and stress. All are asthma causes. Then pathophysiology. Trigger factors, all are trigger factors. The causes of asthma, the all are trigger factors and airway inflammation, hypersecretion of mucus, and swelling bronchial veins, and narrowing breathing passages. So wheezing, cough, shortness of breath, and tightness of chest, all are asthma symptoms. Then start with signs and symptoms. Frequently coughing, dry cough, chest pain, night cough, wheezing, difficulty in breathing, common cold and weakness, all are symptoms of asthma. Now we discuss about Ayurvedic perspectives of asthma. अपथ्य आहार like रज धूम आघात, इससे खव्य गुणता बढ़ती है बॉडी के अंदर, देन प्राणवायु स्वतः दुष्टि बढ़ती है, उससे कफ विकृति होती है, कफ विकृति होने से श्रोतस विकृति होती है, श्रोतस विकृति से प्राणवायु फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उससे विलोम गति और प्राणवायु होगी और उसके साथ में उदर गमित को श्वास होगा, देन स्टमक श्वास की उत्पत्ति हमारी बॉडी के अंदर होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. To all symptoms, to combat we need a combination. Which drug we need to all symptoms reduce? Then we start the mucolytic, expectorant, bronchodilator, restore energy, immunity booster, and digestant. Then we found a drug like Jati Faladi Churn tablet, and it's very good medicines, and its ingredient like nutmeg, clove, ila, तेजपत्र, दालचीनी, नाग केसर, कंपोर, व्हाइट सैंडलवुड, सीसम सीड्स, वंशलोचन, तगरा, आंवला, पीपली, तालिश पत्र, हरडे, कलौंजी, चित्रक, जिंजर, बिडंग, and 2.5% each, and dried vizia leaf 50% content. Next slide, ingredient and MOA. Mode of action, वंशलोचन एक्सपेक्टर होता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होने की वजह से नरिश बॉडी टिश्यूज एंड रिस्टोर बॉडी एनर्जी. ब्लैक पेपर एंड पीपली both are कासर, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, देन रिड्यूस चेस्ट कंजेशन एंड मैनेज URT. चित्रक we all know about आमपाचन. आम blockages the airways, so definitely we need a ingredient like चित्रक, sungi. Then two ingredients are key ingredients, the Vijay dried leaves and Jati Fal. Vijay dried leaves, anti-inflammatory, help in relieving pain, treat the problem of insomnia, also a bronchodilator, antispasmodic, powerful internal cleanser, clear cough, manage asthma, lung detoxification. Jati Fal also anti-inflammatory, expectorant, antispasmodic property. It helps in clearing throat and cough and manage asthma and throat pain. या जब भी किसी मेडिसिन के साथ मिलेगी तो वो एक तरीके से सिनर्जेटिक इफेक्ट जो होता है, जो हमारा योग वाही है, उसकी वजह से विजया उस मेडिसिन की क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है. इसीलिए जाति वाली चूर्ण टैबलेट जो है इतनी एफिशिएंट है. और मैंने अपनी ट्रीटमेंट में काफी सारे पेशेंट्स के नेबुलाइजर इससे छुड़वाए हैं. अस्थमा में वो केवल और केवल एक सिंगल मेडिसिन पर रह सकते हैं और इस मेडिसिन का मैं अपनी प्रैक्टिस में काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और काफी अच्छे से इसके इंप्रूवमेंट भी देखे जा रहे हैं. जब से कैनबिस की मेडिसिन आई हैं, हमारी प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा नेगेटिव वो होता था कि हम पेशेंट्स को रोक के कैसे रखें, हम पेशेंट को क्या ऐसी मेडिसिन दें कि वो हमारे पास रुक जाए और उसको इमीडिएटली रिलीफ आना शुरू. तो कैनबिस की जो मेडिसिन है, वो जो योगवाही उसका गुण है, उसकी वजह से वो हर मेडिसिन का इफेक्ट आपको बढ़ा के देगा. उससे आपको पेशेंट का फ्लो, आपको पेशेंट्स को
रोकने की जो एक कला है वो चाहिए, तो आपको कैनबिस की मेडिसिन का यूज करना चाहिए। और मैं अपनी प्रैक्टिस में जब से कैनबिस की मेडिसिन यूज करना मैंने शुरू किया है, मुझे तो काफी इंप्रूवमेंट इन सब मेडिसिन से लगे हैं। थैंक यू, थैंक यू। Now our next speaker is Dr. Puneet Agnihotri. Please, Dr. Puneet Agnihotri, come on the dais. सभी को नमस्ते। मैं वैद्य पुनीत अग्निहोत्री, हाथरस उत्तर प्रदेश से। भांग के विषय में मैंने जब से आयुर्वेद का अध्ययन किया है, उसमें एक मैं छोटी सी बात कहके मैं लेक्चर का मैंने सन 2000 में आयुर्वेद में प्रवेश लिया था, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ। एक बीमारी कोलाइटिस से मुझे खुद ग्रसित हुआ था और उस समय भांग की कोई दवाई नहीं थी। तो एक लोकल लखनऊ में दवाई बनाने वाले थे, उन्होंने एक लाइव चूर्ण बना के दिया और लाइव चूर्ण जो था उसमें भंगा पड़ती थी और भंगा के बाद उससे मुझे इतना ट्रीमेंडस इफेक्ट मालूम पड़ा, जो मेरे कोलिक पेन और मरोड़ आती थी वो विदिन 2 दिन के अंदर बंद हो गई। उसके बाद 2006 से जब मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस की तो तिलोक विजयावटी जो कहीं करती थी वो मैंने अपने हाथ से बनाना शुरू किया और उसका इफेक्ट डाला। और उसका इफेक्ट इतना आज 2017-18 के बाद जब कैनाबिस मार्केट में आना शुरू हुई है, उसके बाद से हमने इसमें प्रयोग करना शुरू किए। तो अब बात आज मैं आपको इंडस्ट्रियल हेम्प के बारे में बताना शुरू करूंगा। आज संसार में 2 परेशानियां सबसे ज्यादा आ रही हैं। एक क्रूड ऑयल, और हमारे यहाँ पर जो शिव को भगवान शिव से जोड़, हमको जो भगवान शिव से जोड़ा गया है, और ऐसा एक रूपक आता है कि समुद्र का जब मंथन हुआ था तब उसमें से हलाल विष निकला था। अगर हम रूपक की बात करें तो जो हलाल विष था वो एक तरह से क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल भी समुद्र से निकलता है और क्रूड ऑयल से उत्पन्न होने वाले जो जहर है, जितना पॉल्यूशन है, लगभग क्रूड ऑयल से 400 के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, 400 टका। उनसे होने वाला जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, आज हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, समुद्र का बताते हैं कि स्तर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण वो हलाल विष है, वो क्रूड ऑयल है। हम मानवता को बचाने के लिए अगर हम बात करें तो हम इससे डॉलर और क्रूड ऑयल इनका डायरेक्ट संबंध है। हम भारत की इकोनॉमिक स्थिति को अगर सुधार सकते हैं तो भांग के प्रोडक्ट से। भांग जो है 1 एकड़, एक एकड़ खेत में उगाई गई भांग जो होती है 25 एकड़ जंगल के बराबर ऑक्सीजन की उत्पत्ति करती है। अगर 1 एकड़ भांग 4 एकड़ पेड़ के बराबर कागज को पैदा कर सकती है। और भांग का जो पेपर होता है, आज शायद आपको दिया गया, उन्होंने भांग के पेपर को करीब 8 टाइम्स रिसाइकिल किया जा सकता है।
और जबकि कागज का जो पेड़ का जो कागज है वो 3 बार से ज्यादा कभी रिसाइकल नहीं किया। भांग जो होता है 4 से 6 महीने में बहुत आसानी से पैदा हो जाती है। एक पेड़ को पैदा होने में 15 से 25 साल लगते हैं। अगर इस स्थिति से देखा जाए तो हम भांग के अगर हेम्प पेपर का प्रयोग करना शुरू कर दें तो लगभग 4 से 5 बिलियन पेड़ हम आराम से बचा सकते हैं। दूसरी बात, भांग को कहीं भी उगाया जा सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। ये पहाड़ों पर बहुत आसानी से हो जाती है, रेगिस्तान में भी हो जाती है, दलदल वाले इलाके में हो जाती है, कम पानी की जरूरत हो वहां भी हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा कोई क्लाइमेटिक चीज जो है, इसके लिए कॉटन को उगाने में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होता है। अगर हम हेम्प फाइबर, अगर हम भांग से फाइबर बनाने लगे तो हम कम से कम 50 से 60% कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट इफेक्ट हो सकता है हेम्प की कॉटन या हेम्प फाइबर को प्रयोग करने से। आजकल जो हम कैनावास शब्द होते हैं, कैनावास जैसे जिससे हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जूते हुए, त्रिपाल हुआ या डोरी हुई या रस्सी हुई, तो कैनावास जो शब्द है ये भी कैनावास से आया है, कैनवास। तो कैनवास का जो शब्द है और कैनवास के जो प्रोडक्ट हैं वो कैनावास में रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन इस आधार से बहुत सुधर सकती है। सभी प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो भी हैं उनको आप हेम्प प्लास्टिक में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। भांग, अभी यहाँ पर किसी सज्जन ने वो प्रदर्शनी लगाई है, उसमें कुछ बाइक दिखाई गई है, वो भांग से बनी हुई है। भांग की जो स्टील होती है, वो जो भांग का जो स्टील के जो भांग के जो दरवाजे या किसी में उपयोग किया जाए, एक शायद हेनरी फोर्ड जो गाड़ी बनी थी उस समय अमेरिका में, उसके भी दरवाजे हेम्प से बने थे और वो स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं और हल्के होते हैं, यानी आप अपनी गाड़ी की माइलेज भी बढ़ा सकते हैं। भांग का प्रयोग, हाँ, अभी एक चर्चा करीब 2 महीने 1 महीने से चल रही है। अभी टर्की में और आपका सीरिया में भूकंप जो आया था आपके, तो ये बात चल रही है कि हम बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बनाते जा रहे हैं, तो वो कहां तक सफल है। तो हेम्पक्रीट एक ऐसा नया सब्जेक्ट हमारे लिए आ सकता है कि हेम्प की बनी जो क्रीट होती है उसकी आर वैल्यू यानी इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इंसुलेटेड होती है। एक हम लोग महाभारत में कहानी सुनते हैं कि लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों को जलाने के लिए, तो लाक्षागृह जल गया था, उसके अंदर जो सुरंग बनाई थी वो इंसुलेटेड थी हेम्प से, वो नहीं चली थी। ये हमारा जो है वो पूरा हमारे आदिकाल से जो प्रयोग होता आ रहा है हेम्पक्रीट का। ये सब बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कोरोना के समय भी पढ़ चुके थे कि भांग से कैंसर के उपचार, ये सब मेरे से पहले लोग बता चुके हैं। पर इंडस्ट्रियल हेम्प का बेट, हाँ, एक जो बात आ रही है आजकल हम प्रोटीन के लिए और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और ओमेगा 3 इसका बड़ा ज्यादा प्रचलन चल रहा है। सोयाबीन, चिया और अलसी इसकी तुलना में भांग का प्रोडक्शन बहुत सस्ता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन की अगर खेती, शायद मुझे पता नहीं है महाराष्ट्र में होती है नहीं होती है, एमपी में होती है खेती बहुत अच्छी। एमपी में सोयाबीन की खेती पानी ज्यादा मांगती है, पेस्टिसाइड का भी उपयोग बहुत अच्छा होता है इसमें, और अगर इसका प्रोडक्ट है और इसकी प्रोटीन की जो वैल्यू है 30% प्रोटीन है भांग में, और भांग की प्रोटीन सॉल्युबल होती है और एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेबल होती है। भांग से अगर हम कॉस्मेटिक प्रयोग करें तो इसके लिए जो वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो हम दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक करीब 70 तरह के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहाने का साबुन अलग करते हैं, फेस वॉश अलग करते हैं, शेविंग क्रीम अलग करते हैं, उनका प्रयोग अगर हम इसमें हेम्प में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम वाटर पॉल्यूशन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बहुत अधिक तक इससे निजात हम पा सकते हैं। आयुर्वेद के गुणकर्म प्रभाव ये वैसे बता ही चुके हैं। अभी एक सर बता रहे थे कि आयुर्वेद में योग वायु होता है। आयुर्वेद में योग वायु के अलावा आयुर्वेद और इसका भांग का जो गुण होता है वो बेवायु होता है। ये बिना पचे हुए, बिना डाइजेस्ट हुए ये शरीर में फैल जाती है। इसका गुण बेवायु गुण ज्यादा है, योग वायु वो भी हो सकता है पर इसका गुण बेवायु है।
और इसी के कारण ये तो तत्काल रेमडी में काम करती है और इमरजेंसी ड्रग की तरह इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट है इसके हम जो आसानी से सांसप्रोक्त हैं। भारत में भांग का प्रयोग कौन नहीं चाहता है? ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, अमेरिका हुआ, आपका कनाडा हुआ, ये जितने देश हैं ये नहीं चाहते कि भारत इसके भांग के क्षेत्र में आए, क्योंकि शराब को प्रमोट करने के लिए आप जानते हैं कि अल्कोहल लेने से लिवर सिरोसिस होता है, प्रूव्ड है ये। तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है, प्रूव्ड है। पर अभी तक भांग के सेवन करने से किसी भी तरह के कैंसर या की कोई भी बात अभी तक प्रूव्ड नहीं हुई। ये अभी सर आए थे, अवस्थी सर आए थे, उन्होंने ये पॉइंट दिया था कि ये वाला जो 1961 वाला जो था, इसमें 85 में कांग्रेस की सर राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने ये एनडीपीएस दिया, तो इससे बारे में बता चुके हैं वो। ये बस लास्ट में बस ये बोलूंगा कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले हुए जो लाल विष था वो एक कुछ नहीं था, वो आज का क्रूड ऑयल ही था, और क्रूड ऑयल को उन्होंने अपने गले में समेट लिया, जलन की शांति के लिए उन्होंने भांग का सेवन शुरू किया। तो ये प्रतीक है, आज भी हम ठंडाई में भांग का ही प्रयोग करते हैं। महादेव की जो प्रिय भांग है, इसको अगर हम पेट्रोलियम, प्लास्टिक, इनके विष से पूरे विश्व की बचा सकती है, और लगभग भांग से 1200 प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो क्रूड ऑयल और प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर तैयार किए जा सकते हैं। और पूरे विश्व और मानवता आज 3 चीजों से जूझ रहा है, नशा माफिया, एक आपका मेडिकल माफिया, और तीसरा आपका पेट्रोलियम माफिया। इन तीनों माफियाओं के चंगुल से सिर्फ एक हमारी हेम्प बचा सकती है। महाराष्ट्र में तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे पड़ोस के 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी जहां से मैं आता हूं, और मध्य प्रदेश। इनमें भांग लीगल हो चुकी है, और वहां की सरकार भी कह रही है कि आप आइए, इंडस्ट्री लगाइए। और अभी एक एमओयू साइन हुआ है, मेरठ के युवा हैं, उन्होंने फाइबर पर काम किया है, और हेम्प से उन्होंने एक रेडीमेड गारमेंट बनाने की फैक्ट्री अभी चालू की है। अभी यूपी ग्लोबल एक्सपोर्ट मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने अपना एक एमओयू साइन किया, और इसमें जरूरत है और उद्योग आए नए, और हम भांग में खेती को बचा सकते हैं, किसान की आय भी दुगनी कर सकते हैं, और विश्व को हम आर्थिक स्थिति में, अपने भारत को एक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति के रूप में ढाल सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है सर, यूपी में, पूरे इंडिया में नहीं सर, यूपी की मैं बोल सकता हूँ सर, 3 स्टेट में हो सकता है, और भी होगी। यूपी में इलीगल है, I may call upon Dr. Piyush Juneja for few words. Sorry to interrupt in between. There is a very important announcement. We have Dr. Saeed Tahir Hussain with us. He is one of the leading medical cannabis practitioner in our country. Can we have a round of applause for him? He is the encyclopedia of medical cannabis. इनका ट्रेनिंग्स लोग 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार देके पे करके अटेंड करते हैं। तो वी आर वेरी प्रिविलेज टू हैव हिम टुडे इन दिस इवेंट। ये आज हमारे साथ रहेंगे एंड कल भी रहेंगे। न्योगरा के स्टॉल पे आप इनसे मिल सकते हैं। ये बिल्कुल आप मान लीजिए कि विकिपीडिया है, इनकी नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस ट्रिमेंडस है मेडिकल कैनबिस में। मैंने आज तक इंडिया में इनके ज्यादा नॉलेज किसी के अंदर नहीं देखी है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। कल पूरा दिन सर हमारे साथ हैं, कल सर का सेशन भी है 2 बजे। आप सिर्फ इनका नाम आज गूगल कीजिए और इनके बारे में जानिए। And we are very lucky to have him in my last edition में भी इनको लाना चाह रहा था, somehow कुछ personal issue की वजह से सर नहीं आ पाए। Seriously मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जहां आज हम हैं उसमें इनकी नॉलेज का भी बहुत important योगदान है। So I'm again thankful to him for blessing us today and tomorrow. And we all want to integrate. It's not like allopathy versus Ayurveda. It has to be allopathy and Ayurveda together to take it forward. That is our mission and mindset, sir. And thank you so much for joining us. एंड कल का अपडेट है कि डॉक्टर अडवाणी और डॉक्टर महाजन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बोथ आर लीडिंग प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया इन एलोपैथिक। सो आप लोग कल जरूर टाइम निकाल के अगर आ सकते हैं तो। एंड आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू कंटिन्यू द सेशन एंड वी विल बी फेलिसिटेटिंग यू इन सम टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज कंटिन्यू, द होस्ट कैन कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू।
Uh, uh, Now felicitation program is going on. I would like to call upon Dr. Nilesh Doshi sir to come on dais. Felicitated by Dr. Piyush Juneja sir. Again, thank you so much, sir, for your. These are the special awards from Indian Vidyas and Hemp Expo for the three eminent doctors of our organization. He has selected three doctors from the organization. He likes to felicitate them. So, I mean, I was not aware that even I am the fourth one. Thank you so much for felicitating me. Otherwise, I mean, really, I was not aware that the next three doctors were the most eligible person, and they are going likely to be felicitated. Now next, Dr. Dilip Trivedi sir, please come on the dais. Felicitated by him. Dr. Jasmine Wani, please come on the dais, our scientific secretary. It will be my pleasure to have a felicitation of First Lady of the organization, Dr. Jasmine Wani. Next is our scientific secretary, Dr. Yogesh Damne. A small request. We want to acknowledge all of you as well. So whosoever can stay back around 6 weeks to starting the award ceremony for the industry and some other doctors. So आप में से जो भी रुकना चाहते हैं प्लीज रुकें. हम चाहते हैं आपको भी फेलिसिटेट करना एंड हम चाहते हैं कि आपको भी फेलिसिटेट करना. बस थोड़ा सा हम उसके लिए टाइम चाहिए होगा. अगर आप टाइम निकाल सकते हैं so we are starting the award ceremony. आप लोग all are welcome to join us and please give us a list. Please give us a list of the doctors हैं. जो stay back कर रहे हैं. We will felicitate all of them. Thank you. फ्रेंड्स, अपने एसोसिएशन को 30 इयर्स लगभग 30 इयर्स पूरे हो चुके हैं
और हम चाहते हैं कि इस जर्नी में जिन जिन का साथ हमें मिला, इस एसोसिएशन के प्रोग्रेस में जिन्होंने अपनी मेहनत लगन दी, उनको भी हम हमारी एसोसिएशन की तरफ से कुछ सम्मान दिया जाए, ऐसे हमने सोचा। इसलिए ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हमने रखा है। इसके बारे में मैं डॉक्टर नीलेश जोशी सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द कहें। फ्रेंड्स, पूरी टीम एएपी की तरफ से मेरे को बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि जो चीज हम पिछले अगस्त सितंबर महीना में, शायद जून महीना में करने वाले थे, कोई कारणवश वो नहीं हो पाई, वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो हमारी जो ये सोच थी फेलिसिटेशन करने की, वो भी थोड़ी डिले हो गई। एंड वी वर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, right opportunity and right place where we can felicitate AAP pillars. Why am I saying कि pillars? ये pillars इसलिए है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी रिकॉग्नाइजेशन मिला है, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन मैं मानता हूँ बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो उनकी बहुत बड़ी मेंबरशिप है, ना तो वो पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में फैला हुआ है, मगर इतना जरूर है कि इनके जो कार्य है वो ना महाराष्ट्र ना देश मगर पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और ये जानते हैं तो क्यों जानते हैं, किसकी बदौलत जानते हैं? तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बाद में 2 लेक्चर्स रखे हैं, वो बाद में लेंगे, मगर इसके पहले हमने सोचा कि ये फेलिसिटेशन कर लिया जाए। लोग जाने से पहले जिन लोगों को हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लोग रहे और उनका सही अर्थ में रिकॉग्नाइजेशन हो, ऐसी हमारी इच्छा है। तो 4 अप्रैल 1993 को इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग हुई। तब से लेकर 30 साल की जर्नी में इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी कुछ काम किया आयुर्वेद के लिए। और ये भारत आज ये जो भी खड़े है, एसोसिएशन खड़ी है, वो 60 to 70 एक्टिव मेंबर्स जिन्होंने पिछले 30 साल में अविरत काम किया है, उन लोगों की बदौलत है। उसमें से जो सीनियर मोस्ट 15 डॉक्टर को हमने चुना था, उसमें से 3 डॉक्टर्स कोई कारण की वजह से नहीं आ पाए हैं। तो बाकी के 12 डॉक्टर्स का हम यहाँ पे सम्मान करना चाहेंगे, उनको फेलिसिटेट करना चाहेंगे और पूरी टीम एएपी उसके लिए गौरवान्वित है। तो आप लोग सब तालियों की गूंज के साथ ये सब के सब जो प्रैक्टिशनर्स है, जिन्होंने इस एसोसिएशन को बनाने में हेल्प की है, उनको तालियों की गूंज के साथ बधाई देंगे, ऐसी में पूरी एसोसिएशन चाहना रखती है। और मैं इसके साथ में डॉक्टर दीपक रसाल को आगे का कार्य लेने के लिए। थैंक यू सर। मैं नाम लेते जाऊंगा, प्लीज सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे नाम अनाउंस होता है वैसे स्टेज पर आए। डॉक्टर दिनेश जोशी सर। नीलेश जोशी सर, डॉक्टर नीलेश जोशी सर, डॉक्टर दिलीप त्रिवेदी सर, डॉक्टर संजय वानी सर, अमिता याग्निक मैडम,
इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर है उनको सम्मानित करने के लिए आए। डॉक्टर दिनेश जोशी सर। डॉक्टर दिनेश जोशी, अब आवाज आ रही है बराबर? पूरे मालाड को हमारे साथ जुड़ने के लिए जिन्होंने हेल्प की है, ऐसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर दिनेश जोशी। Big round of applause. and honor to felicitate you. Please come. तालियों की गूंज होनी चाहिए। इंडस्ट्री वाला लाइन मत अवार्ड करेगा पहले इंडस्ट्री डिस्कशन को रिकॉर्ड करना। डॉक्टर जेपी गेलानी सर। तेरे लैपटॉप वहाँ है ना, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्राइवेटली फिर और लैपटॉप एक्सचेंज करना पड़ेगा। Thank you so much, sir. बहुत बहुत आभार। मैंने बहुत कम संस्थाएं ऐसी देखी है कि पिलर को याद करते हैं, जो रह गए और पीछे रह गए लोग आगे निकल जाते हैं। मैं फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ संस्था का कि हमको आपने याद किया। गिलानी साहब यहाँ पे उपस्थित नहीं रह पा रहे हैं, तो हम उनका दिनेश जोशी सर को ही हम मोमेंटो और साल से पढ़। डॉक्टर जयंत त्रिवेदी सर। JN त्रिवेदी सर। दहीसर के हमारे काफी जाने माने और लाडले डॉक्टर त्रिवेदी सर। हाँ, शिव जी अपना। हेलो जी, गुड इवनिंग। मैम अभी बात नहीं कर रही। डॉक्टर विलास गुजर सर। डॉक्टर विलास गुज्जर सर बोरीवली के काफी सीनियर मोस्ट डॉक्टर है और उन्होंने भी इस एसोसिएशन को खड़ा करने के लिए और स्पॉन्सरशिप लाने के लिए काफी मदद की है। उसके साथ में मेरे को लगता है उनके सन और उनके
उनकी बहू दोनों आए हैं। डॉक्टर अशोक तावरी सर। लाइव स्ट्रीमिंग डॉक्टर अशोक तावरी सर। तालियों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज। ये अनसीन हीरोज है, इन्होंने एसोसिएशन के लिए बहुत सारा काम किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट तालियों की गूंज के साथ उनका सम्मान किया जाए। बोरीवली ईस्ट के हमारे हीरो हैं। मेंबर्स और स्पॉन्सरशिप लाने के लिए काफी है मदद की है। मेरे को बराबर याद है कि 2010 की एक इवेंट थी, तब सर पूछ रहे थे एलन का कोई है कि नहीं, एलन का कितने लोगों ने बताया, एलन फार्मा का, बराबर है ना। आई स्टिल रिमेम्बर दोज वर्ड्स। और उस टाइम पे द्विवेदी सर, गुज्जर सर, सबने बोला कि हमने ये ब्रोशर दिया है, तो थैंक यू सो मच सर, आई डू रिमेम्बर योर वर्क। डॉक्टर सीआर यादव सर। डॉक्टर सीआर यादव सर। शायद कुछ इमरजेंसी आने की वजह से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और डॉक्टर श्याम शर्मा सर, श्याम सुंदर शर्मा सर। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं ये कहूंगा कि मलाड से लेकर मीरा रोड तक हर जगह से इस एसोसिएशन में जुड़ने के लिए डॉक्टर्स को लेके आए हैं, जो कि मुंबई वैद्य सभा के सेक्रेटरी है और महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। प्लीज तालियों के गूंज के साथ इनका सम्मान करें। शर्मा सर, आप कुछ कहना चाहते थे, प्लीज। सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को बधाई देता हूँ कि निरंतर इनकी कोई न कोई नई योजनाएं होती है। मुझे मालूम है जो ताज में जो प्रोग्राम किया था वो अभी भी याद आता है, और मैं चाहूंगा कि ये जो त्रिमूर्ति यहाँ खड़े हैं, वाणी सर, द्विवेदी सर और दोषी सर, इसी प्रकार का और कोई प्रोग्राम करें जिसमें हम लोग आगे से बढ़ करके काम। थैंक यू सर। सर, ये एसोसिएशन जो भी खड़ी है वो आप सब लोगों के बदौलत, और आप सब लोग इसके पिलर हैं, और ऐसी ही शुभकामनाएं आपकी बनी रहे। हम ऐसे ही आप कार्यक्रम आगे देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू। और मेरा साथ हमेशा रहेगा, पहले भी था, अभी भी है। समय कम होता है लेकिन दिल से मैं थैंक यू। इसके लिए हमको कभी कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर वासुभाई ठक्कर। डॉक्टर वासुभाई ठाकर,
इस एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी काफी साल तक निभाई है, हम उसको नहीं भूल सकते सिंगल हैंडेडली। और ट्रेजर सर, उनकी जोड़ीदार हम सामजी भाई को आज हम मिस कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका शुरू सम्मान होना चाहिए। शुरू के सभी कार्यक्रमों में वासु भाई सामने से बोलते थे कि रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मेरी, और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के कभी भी ऐसा नहीं किया कि भाई मैं ये नहीं होगा मेरे से, और फ्लॉलेसली काम किया। थैंक यू सो मच सर। हमको खुशी होती है कि ऐसे ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज भी। उनकी जो इमोशंस है वो इमोशंस आज भी इतनी बरकरार है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुरेश जोशी सर। नहीं, शायद वो नहीं आए हैं। डॉक्टर सुरेश जोशी जो कि द्वारकेश्वर में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी इस एसोसिएशन को आगे लेके जाने के लिए काफी हेल्प की थी, तो वो आज आ नहीं पाए, मेरे को लगता है कोई कारणवश। डॉक्टर अशोक कुलकर्णी सर। पूरे वसई विरार के एरिया को ढूंढ ढूंढ के इस एसोसिएशन के साथ जोड़ने वाले हमारे डॉक्टर अशोक कुलकर्णी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर योगिनी बेन शाह। योगिनी बेन, स्पॉन्सरशिप लाने के लिए संजय भाई से कंधे से कंधा मिला के हेल्प करते हैं। जोरदार तालियां। डॉक्टर उर्वशी बेन शाह। कुछ लोग शांत प्रकृति के रहते हैं, मगर ऐसे ऐसे काम करके देते हैं कि एसोसिएशन को उससे काफी मदद मिलती है। ऐसे हमारे उर्वशी बेन। Once again, on the behalf of association, I would like to thanks all the pillars, all the legendary doctors who had played very important role in building the association. फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है, ये अप्रिसिएशन अवार्ड, ये एक शुरुआत है, और हमारी इच्छा ऐसी है कि अगले कुछ दिनों में जितने भी एसोसिएशन के एक्टिव प्रैक्टिशनर्स रहे हैं, उन सभी लोगों का इसी तरह से हम सम्मान करेंगे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। तो जो बच गए हैं और सीनियर भी है, वो ऐसा नहीं सोचे कि हम लोगों को तो याद ही नहीं किया, या हमने इस एसोसिएशन के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, आप लोगों ने भी किया है, और आप लोगों का भी समय समय पे सम्मान किया जाएगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है, ऐसी हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनाउंसमेंट करा दूं। पीयूष भाई, इस हमारे एसोसिएशन को जिन्होंने इस मंच पर इनवाइट किया और इस इवेंट के लिए इवेंट पार्टनर बनाया,
वो आज के उत्सव मूर्ति डॉक्टर पीयूष जुनेजा को उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डायस पर आए। उनका भी हम एज ए टोकन ऑफ लव दे के सम्मान करेंगे। Thank you, Piyush Juneja sir, for this opportunity. Is समय की 2 लेक्चर बाकी है, सुनना है कि घर पे जाना है? घर पे जाना है ना? बस हम सोचते थे कि सबको घर पे जाना है, हमको सबको लेट नहीं कराना है, ट्रैफिक में तकलीफ नहीं हो जाए। चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर जुनेजा सर की ख्वाहिश है कि उनके पास जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, जिन लोगों का फेलिसिटेशन नहीं हो पाया है, उन लोगों को सबको सम्मानित किया जाए। तो डॉक्टर विनोद पांडे प्लीज कम। सब फोटो लो उनका, रह नहीं जाए इधर से। डॉक्टर के बी भारती सर, डॉक्टर रश्मिकांत शाह सर, डॉक्टर विनोद कोटक सर, हाँ, डॉक्टर बेला शाह, बेला मैडम, बेला भट्ट, डॉक्टर शशिकांत लांडगे सर, डॉक्टर अमिता याग्निक मैडम, डॉक्टर विकास दुबे सर, डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर श्वेता जाडेजा, उनको कैसे भूल सकते हैं हम। पूरे इस इवेंट की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पे ली, कंधे पे ली और बहुत खूबी से ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। एक्चुअली उनका भी एक आज लेक्चर था, लेकिन शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से हम वो कर नहीं पाए। मेरे को लगता है कि 3 लोगों के लिए, डॉक्टर योगेश दामने, डॉक्टर दीपक रसाल और डॉक्टर श्वेताबा के लिए एक बिग राउंड ऑफ एप्लॉज हो जाए। थैंक यू सर।
डॉक्टर दीपक रसाल, डॉक्टर योगेश दामने, जीएन त्रिपाठी, डॉक्टर जीएन त्रिपाठी, हम जो बैठे हैं उसमें से सब प्लीज, विनायक विनायक बड़े, या प्लीज। और कोई एसोसिएशन की तरफ से डेलीगेट्स में से? हाँ, मिसिस अमृता कुलकर्णी, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ ना, अमृता, यस। और कोई रह गए हैं तो प्लीज। डॉक्टर कल्पना चौधरी है क्या? मैं ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं, पूरव 2 बच्चे हमारे 2 ट्रस्टीज के बैठे हैं, तेजस और मैत्री। तेजस और मैत्री, पूरव आजा और पूरव, तीनों का भी सम्मान किया जाए यहाँ पे, ताकि आगे की पीढ़ी में हमको काम में आए, हेल्प करे। इसके लिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ आप ट्रस्टी के बेटे हैं, बेटियां हैं, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको इग्नाइट करने के लिए ये करवा रहे हैं। डॉक्टर लास्ट में मैं डॉक्टर जस्मीन मैम को वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए बोलूंगा। और कोई बाकी रह गया है तो बोलिए। तो प्लीज टाइमर को थोड़ा एक बार क्लोज कर सकते हैं अपने अपने एसोसिएशन के स्टॉल पे भी फोटो खिंचवाइए। आपका भी स्टॉल है एसोसिएशन का। थैंक यू।
Okay. Congrats. अरे हाँ कल फोन आया वो तो देखना नो चाली मटर फोन आया पप्पा वाले पप्पा छे बोलते हैं से बे लेक्चर पप्पा हेलो पीपीटी प्रिपेयर करके एक बोलते हैं इस प्रोग्राम का सबसे मीठा काम मुझे दिया गया है वोट ऑफ थैंक्स, लेकिन उसके पहले दो बिग सॉरी फॉर टू ऑफ आवर एमिनेंट स्पीकर्स, डॉक्टर दिलीप त्रिवेदी एंड डॉक्टर श्वेताबा जाडेजा. A very big sorry. First of all, I would like to thank Dr. Reddy sir, Director Ayush. We'll do a small felicitation of Dr. Kalpana Chaudhary. So, I thank Dr. Sampada San, Dean of R.A. Podar Medical College. A big thank you to Dr. Mahesh Harith, Dean of T.Y. Patil Medical College. And a very big thank you to Dr. Piyush Juneja, Director, Indian Vaidyas, who gave us